Let us start with the Guru Ahvan. Before we start with Swamijis discourse, we would love to cordially welcome Shri Swamiji, who is with us today and we are our retreat. Please welcome Shri Swamiji. Together with his wife Marga and the whole satsang team. And because of Swamiji, many of his disciples have joined Samapa meditation, and many of his disciples are here today, also during this retreat. And Swamiji has explained during the last retreats that Swamiji is a jeweler who has knowledge about gemstones, and he is able to recognize a true diamond. So he was able to recognize the true diamond, the teachings of Swamiji, and explain it to his disciples. So we're, from the depth of our heart, thankful that you're here joining us today with all of the many of your disciples. And thank you, Lord. स्वामी जी कृपया आप अमृतवाणी बरसाइए। स्वामी जी कृपया आप अमृतवाणी बरसाइए। स्वामी जी कृपया आप अमृतवाणी बरसाइए। I asked Swamiji to shower us with his words. My salutations to all the pious souls gathered here. There is a complaint today that today's youth is not interested in spirituality. I'm not talking about one specific country, this is applicable to all countries. It is something to think about. Why is it this way? This is because today's generation wants practical knowledge in addition to theory. If you say there is God, they won't believe that. They want to experience this. हमारे माँ बाप ने हमको कहा भगवान है मंदिर में चलो तो हम चले गए लेकिन आज के लड़के को अगर बाप है मंदिर में चलो तो पहले बोलता है प्रमाण दो कि भगवान है. Our parents told us there is a God, come to the temple, and we went. But if you tell today's children that there is a God, they will say prove it. तो बताओ ना कौन बाप प्रमाण दे सकता है भगवान का? You tell me which father can prove God to his son. कुछ ऐसे प्रश्न है आज के युवा पीढ़ी के उन प्रश्नों के कारण ही ये अध्यात्म से विमुख है. There are such questions in the minds of the youth, and that is why they are not coming to spirituality. और जो आज युवा पीढ़ी के प्रश्न है वही के वही प्रश्न मेरे मन में भी बचपन में थे. And the same questions that today's youth are asking, I also asked in my childhood. और उन्हीं बचपन के प्रश्नों के कारण मैं इस मार्ग में आया. And it is because of these questions that I came into this path. मैं मेरे नाना नानी के साथ नागपुर में रहता था.
I used to live in Kanpur with my grandparents. और नाना का भगवान हनुमान जी था और नानी का भगवान कृष्ण था। My grandfather believed in God Hanuman and my grandmother in Lord Krishna. तो नानी के साथ मैं कृष्ण के मंदिर में जाता था और नाना के साथ हनुमान के मंदिर में जाता था। So I used to go to the Krishna temple with my grandmother and to the Hanuman temple with my grandfather. लेकिन वो एक दूसरे के मंदिर में कभी नहीं गए। But they never went to each other's temples. अच्छा बोलोगी ना कि नाना जी चलो कृष्ण के मंदिर में, बोलते नहीं, वो नानी का भगवान। If you told my grandfather, come, let's go to the Krishna temple, he would say, no, that's your grandmother's temple. और नानी को पूछो कि हनुमान मंदिर चल, तो बोले नहीं, नाना का भगवान। And if you ask my grandmother to go to the Hanuman temple, she would say, no, that's your grandfather's temple. तो उनके इस व्यवहार से मैं बचपन में समझ गया था परमात्मा मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी परमात्मा मानता। Based on this behavior, I realized in childhood that God is something of belief. God is whoever you believe in. पति पत्नी अलग अलग भगवान को माने, क्योंकि उनका संसार मजे से कर सकता है। Even if a husband and wife believe in different gods, their family life can continue in harmony. बाद में देखा हमारे घर पे एक गुरु जी आते थे। At one point, a Guruji came to our home. मेरी नानी उनको भगवान बोलती थी। My grandmother used to call him God. वो भगवान का माइक है। She used to say he is the microphone of God. उनके मुख से भगवान बोलता है। God spoke through his mouth. एक दिन वो बीमार हुए और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। One day he fell ill and was admitted to a hospital. मैंने नानी को पूछा, नानी या तो भगवान ही नहीं है या तो ये भगवान के माइक नहीं है। I told my grandmother, either there is no God or he is not the microphone of God. लेकिन नानी दोनों ही बातें मानने को तैयार नहीं। But my grandmother refused to accept either of these. मैंने नानी को कहा, अगर भगवान ही के माइक होते तो भगवान अपने माइक को अच्छा रखता। I told her if he was the microphone of God, then God would have kept him healthy. उसके बाद में देखा एक मुसलमान फकीर मोर पंख लेके मस्जिद के सामने खड़ा रहता था। आने वाले को उसका जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको बीमारियां उसकी झाड़ के ठीक करता था। Then I saw that there was a Muslim fakir standing outside the mosque. He had a peacock feather, and without asking which religion or caste the people going to him were, he would cure everyone using his peacock feather. उसका आशीर्वाद लेने सब धर्म के सब जाति के लोग जाते थे। People of all religions and castes used to go to this fakir to get his blessings. वैसे ही एक हिंदू साधु को देखा जो भगवती देके लोगों की बीमारियां ठीक करता था। I also अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग जाति के लोग थे। I saw a Hindu saint who also used to cure people by giving them holy ash. Lots of different people of different religions and castes went to this Hindu saint as well. इसके ऊपर मैंने मेरे नानी को प्रश्न पूछा, नानी मुसलमान हिंदू को और हिंदू मुसलमानों को कैसे ठीक कर सकता है? क्या भगवान एक है? Again, I asked my grandma, how can a Muslim fakir cure a Hindu and a Hindu saint cure a Muslim? Is God one and the same? लेकिन नानी के पास इसका भी कोई जवाब नहीं। My grandmother had no answer for this either. नानी हर दफे एक ही मंत्र याद करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी और परमात्मा कल भी रहेगा। My grandmother used to simply chant, God is indestructible, He used to exist in the past, exists in the present and will exist in the future. मैं बचपन में समझ गया था परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। So in childhood I had already understood that God can have no body. क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। Because there is no body that existed in the past, exists today and will exist in the future. क्योंकि सारे शरीर नाशवान हैं। Because all bodies are destructible. तो शरीर कैसे भगवान हो सकता है? So how can a body be God? उसके बाद में फिर देखा कि हरिद्वार में कुछ लोग जा रहे थे नाव से और वो 16 लोग डूब गए, नाव की नाव डूब गई। Then I saw that there was an incident where 16 people who were going to Haridwar by boat drowned and died. फिर नानी को कहा, नानी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते वो तो बात समझ में आती है, लेकिन जो लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे थे, उनको भी भगवान ने नहीं बचाया। भगवान तेरी पूरी कल्पना है, भगवान नाम का कोई चीज इस दुनिया में नहीं। Again I told my grandmother, I understand that accidents happen on the road, but these are people who were going to Haridwar, to God, and yet they died. This means there is no God. It's all your imagination. ऐसी घटनाएं अभी भी होती ना। अब जब तो कई लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं कहीं और उसके बाद में कहीं एक्सीडेंट में मर गए। Such accidents still happen. People are on their way to a pilgrimage and there's an accident and they die. फिर देखा तो वो कृष्ण के मंदिर में
एकदम चिपक करके एक पुजारी बैठता था। मेरे को लगा शायद इसको भगवान की ज़्यादा जानकारी है। I saw that there was a priest at a Krishna temple who used to sit very close to the idol. I figured maybe he knew more about God. दूसरे दिन वो घर पे आया पूजा करने के लिए, तो 11 रुपये की जगह 21 रुपये दो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। The next day he came home to perform a rite and started arguing with my grandfather that he wanted 21 rupees instead of 11 rupees. तो मेरा वो भी भ्रम टूट गया, ये भगवान के ज़्यादा करीब है, इससे भगवान को जाना जा सकता है। मैं सोचा कि ये आदमी इतना लालची है तो भगवान कितना लालची है। Again my illusion was broken. If this person was so greedy, then how greedy must God be? He could not tell me about God. लेकिन ये जिज्ञासा जरूर है। लोग पागल तरीके से भगवान 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 करते हैं, इतने मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, तो फिर भगवान तो होगा ना, इतने क्यों जाते हैं? But I was very curious. People go to temples and they talk about God. There must be something. नानी को मैंने कहा मैं भगवान को खोजूंगा। I told my grandmother I will find God. मैं भगवान को ढूंढूंगा। I will look for God. और जब कभी भगवान मुझे मिलेगा तो उस भगवान को सारी दुनिया से मिलाऊंगा। And when I find that God, I will introduce him to the rest of the world. नानी बोली तू छोटा है तो तेरे पास उम्र का खजाना है, तो जरूर कर सकता है। मैं नहीं कर सकती, मैं बुढ़ी हो गई। My grandmother said, "You are young. You have the gift of life, age. So you can definitely achieve this. I'm old. I cannot do this anymore." तो बचपन से भगवान को खोजने की इच्छा जागृत हुई। So I had the wish to find God ever since my childhood. फिर किसी ने बोला जाप करो, जाप करने से भगवान मिल जाता है, तो जाप किया। Someone told me you must chant in order to find God, so I chanted. एकदम पागल से 24,000 जाप किया। I chanted 24,000 times like a crazy person, उसके बावजूद भी भगवान नहीं मिला। but I couldn't find God. किसी ने बोला ये ग्रंथ पढ़ो, वो पढ़ने से भगवान मिल जाएगा, वो ग्रंथ पढ़ा, कई बार पाठ किया, फिर भी भगवान नहीं मिला। Someone told me that I could find God by reading certain scriptures. I read those scriptures several times. I still could not find God. किसी ने बोला यज्ञ करो, यज्ञ करने से भगवान मिलता है, यज्ञ किए, खूब बार-बार यज्ञ किए, तो भी भगवान नहीं मिला। Someone told me I could find God by doing yajnas, a fire ceremony. I did that several times as well, and I still could not find God. रेगुलर मंदिर जाने से भगवान मिलता है, ऐसा बोले तो भगवान वहाँ भी गए, वहाँ भी नहीं मिला। Someone told me to go to the temple to find God. I went to the temple but could not find God there either. शॉर्ट में ये कहना है कि भगवान के नाम पे जिसने जो कहा सब किया, लेकिन अंत तक भगवान नहीं मिला। I did everything that people recommended and suggested I do, but I could not find God. तो मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, प्रयास से भगवान कभी मिल ही नहीं सकता। So on the basis of my experience, I can say that it is not possible to find God through effort. जब मनुष्य के प्रयास समाप्त होते हैं, तो प्रार्थना को जन्म होता है। When efforts end, that's where prayer begins. मेरे भी जीवन में जब भगवान को खोजने के प्रयास समाप्त हो गए, तो प्रार्थना का जन्म हुआ। In my life as well, when I stopped the attempts to find God, prayer began. साथ साथ मेरा जीवन भी चल ही रहा था। My life continued as usual. मेरा अच्छा एजुकेशन हुआ, I was well educated. अच्छा M.Com तक पढ़ाई हुई, I studied and got an M.Com, अच्छी Master's मार्केटिंग in मैनेजर की Commerce. पोस्ट मिल गई, I got a good job. अच्छा कलकत्ते में एक कंपनी में लगा हुआ था। I was employed at a good company in Calcutta. एक युवा जो सपने देखता है, वो सब सपने उस समय मेरे पास थे। All the dreams of the common man, I had everything I needed. लेकिन फिर भी एक प्रकार की भीतर से बेचैनी, There was a sort of restlessness within me, however. एक भीतर से अतृप्ति थी, There was a certain dissatisfaction inside of me. कुछ तो भी खोज थी जो जारी थी। There was some surge that was awakened within me. वो खोज थी परमात्मा की। That was the search for God. परमात्मा की खोज निरंतर चली रही थी। The search for God went on continuously. हुगली नदी के किनारे कई हमारे लोग बैठ करके भजन करते थे, तो शाम को ऑफिस छूटने के बाद जाके उनके पास बैठा था। Along the side of the river, there were people who used to sing bhajans every evening. I used to go and sit with them. शायद वहाँ कुछ मिल जाए। Maybe I could find something there. कई मंदिरों में भटकता था, वहाँ कुछ मिल जाए। I went to several different temples. I thought perhaps I could find something there. वो गंगा नदी के किनारे पे बैठे रहता था।
I used to sit along the banks of the river Ganga, और प्रार्थना समाप्त हो गई, रोना प्रारंभ हो गया। and once my prayers ended, I would start crying. रोता था, वो गंगा नदी के पानी को देख करके रोता था। ये पानी कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी न किसी क्षण समुद्र को जाके मिलेगा और ये पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। I used to look at the water and think, this water here will at some point in the future, at some particular spot, meet with the ocean, and its own identity will be lost. नदी कहीं ना कहीं जाके समुद्र में विलीन हो जाएगी, जहाँ उसका नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और समुद्र का अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। As the river will meet the ocean at some point, the river will lose its identity, and the identity of the ocean will be manifested. मेरे जीवन में भी कब समुद्र आएगा, मेरे जीवन में भी कब गुरु मिलेगा, जहाँ जाकर के मेरे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। When will I find the Guru? When will I find the ocean of my life where my physical identity will be destroyed? ऐसा सोचते सोचते रोता। I used to think of this and cry. ऐसे समय एक बार मुझे काम के सिलसिले में कानपुर जाना पड़ा। Once I had to go to Kanpur for a matter of work, और वहाँ पे बैंक का स्ट्राइक हो, and there was a bank strike there. तो 4-5 दिन कुछ काम होने वाला नहीं। I knew that I would not be able to achieve anything in the next 4 or 5 days. और ध्यान में ना मुझे बार-बार पशुपतिनाथ जाने की इच्छा होती थी, नेपाल जाने की इच्छा होती थी। And during meditation, I often had the desire to go to Pashupatinath in Nepal. तो ऐसे बैठे-बैठे मैंने मैप देखा तो वहाँ से नेपाल पास था। I looked at a map and saw that Nepal was close from there. मैं कानपुर से गोरखपुर पहुँचा। So I reached Gorakhpur from Kanpur. गोरखपुर से ट्रेन से कार से सोनाली पहुँचा। Then I took a car to Sonali. और सोनाली से फिर बस लेकर के काठमांडू पहुँचा। Then I took a bus to Kathmandu. दूसरे दिन जब काठमांडू पहुँचा और पशुपतिनाथ में मैं अभिषेक करने के लिए गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ, वहाँ का पुजारी मेरी राय देता। The next day, when I went to the Pashupatinath temple, I was surprised to see that the priest there was waiting for me. उन्होंने कहा, आप आने वाले हो, मुझे 3 दिन पहले से पता। He said, I knew 3 days ago that you were going to come. वहाँ एक नेपाली सज्जन आकर के मेरी राह देख रहे थे। There was a Nepali gentleman there who was waiting for me. तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ। मैंने ना मेरे घर पे बताया था, ना मैंने ऑफिस में बताया था कि नेपाल जा रहा हूँ। मैं सोचा यहाँ कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं आ रहा हूँ। I was very surprised. I had not informed my family, I had not informed my office that I was going to come to Nepal. How did these people know that I was coming here? फिर वो नेपाली सज्जन को मिला। Then I met the Nepali gentleman. उसने कहा, मैं शिबू नाम के एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारे गांव के पीछे हिमालय में एक गुफा है। तो गुफा में शिव बाबा रहते हैं। वो जिस दिन प्रकट हो जाते हैं उस दिन हमारे लिए उत्सव मनाया जाता है। He said that he came from a small village called Shibu. Behind the village there was a cave where a guru called Shiv Baba used to meditate. Whenever Shiv Baba appeared to the village, it was as if there was an atmosphere of a festival in the village. एक बार जब वो प्रकट हुए थे तब उन्होंने आपको लाने के लिए कहा। The last time that he appeared, he had asked him to bring me to you. उसके शब्दों में क्या था मालूम नहीं, लेकिन दिमाग बंद हो गया था और बिना सोचे समझे मैं उसके साथ चल पड़ा। I don't know what it was about his words, but I stopped thinking and I simply followed him. बस से यात्रा की, उसके बाद में 3 दिन तक पैदल यात्रा की। First we went by bus, then we walked for 3 days, और बाद में जाके खुद and finally reached the village. उसने मुझे सुबह ले आके ऊपर एक पत्थर पे बिठा दिया, यहाँ पे बैठे रहो, शिव बाबा यहीं मिले। He took me up into the mountains and made me sit on a stone in the morning, and he said, wait here, Shiv Baba will appear. और एक छोटी सी गुफा की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ से वो आएंगे। He pointed at a small cave and said he will come from there. मैं सवेरे से शाम तक बैठा रहा, अंधेरा होने तक। I waited all day until evening, until it got dark. तब देखा वहाँ से एक वृद्ध सज्जन बैठ करके बाहर निकल रहे थे। I finally saw an old gentleman appear from the cave, crawling out. वो गुफा का मुंह इतना छोटा था कि खड़े-खड़े बाहर ही नहीं आ गया। The mouth of the cave was so small that he could not simply walk out. वो धीरे-धीरे मेरे पास में आए। He gradually came towards me.
और जैसे से पास में आए तो देखा खूब ऊंचा उनका कद था। As he came closer, I saw that he was very tall, गोर वर्ण था, very fair, खूब लंबे बाल थे with long hair और नीली आंखें थी। and blue eyes. जैसे जैसे पास में आते थे वैसे वैसे मैंने एकदम उनको साष्टांग दंडवत कर दी। As he came closer, I bowed down to him. उन्होंने उठा करके मुझे गले लगाया। He lifted me up and hugged me. उन्होंने कहा मैं 40 साल से इस गुफा में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। He said, I've been waiting for you in this cave for 40 years. चल ऐसा करके वो मुझे गुफा में ले गए। Come with me, he said, and took me into the cave. और गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी। The cave inside was very large. वो एक पत्थर पे जाके बैठ गए। He went and sat on a stone. दूसरे दिन सवेरे मेरे ऊपर कुछ अभिमंत्रित पानी डाला और सर पे हाथ रख दिया तो मैं 3 दिन समाधि में चला गया। The next day, he sprinkled some water on me and placed his hand on my head. And I went into a meditative state for 3 days. भारतीय संस्कृति के अनुसार शरीर से आत्मा बनने में भी 3 दिन लगते हैं। According to Indian tradition, it takes 3 days to become a soul from a body. मेरी भी शायद पूरी 3 दिन की यात्रा थी। Maybe that was the 3-day journey that I went through. और 3 दिन बाद उठा तो वो हंसते हुए बैठे हुए सामने। And after 3 days, when I woke up, he was sitting in front of me. मैंने उनके पैर पकड़ लिए, उनको परमात्मा मान लिया, उनको परमेश्वर मान लिया। I held his legs and I accepted him as God. परमेश्वर इसलिए माना क्योंकि मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। I accepted him as God because this experience had ended my search for God. मुझे जीवंत परमात्मा के दर्शन हो गए। I have witnessed a living God. एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मान करके आध्यात्मिक प्रगति हुई। I achieved spiritual progress and development by accepting a living person as God. उनको जैसे ही परमात्मा माना वैसे ही मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। As soon as I accepted him as God, my search for God ended. और मुझे परमात्मा मिल गया, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ समाधान प्राप्त हो। And the fact that I had found God gave me extreme satisfaction. दूसरा, मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। In addition, my journey inwards began. जो परमात्मा बाहर हम खोजते हैं, वो बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। ये ज्ञान प्राप्त हो। The God that we are looking for outside is actually within us. I acquired this knowledge. दूसरा, किसी को भी परमात्मा मानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिसीविंग है। हमारे रिसीविंग सब मिल जाती है, 100% रिसीविंग है। Accepting someone as God opens up our power to receive. तो उसके कारण मेरे को उनका मैं पूरा झुक गया उनके सामने, समर्पित हो गया। So I bowed down completely in front of him. I was completely surrendered to him. तो उनका सारा ज्ञान मुझे ऑटोमेटिकली प्राप्त हो गया। And so automatically all of his knowledge was transferred to me. अब उनको परमात्मा क्यों माना? Why did I accept him as God? देखिए, जैसे आपके गांव में खूब दूर से एक नदी का पाइप लाइन से पानी लाया जा रहा है। Assume that there is a huge pipe that is bringing water from far away to your village. नदी के पास में देखोगे तो वो पाइप का साइज 20 फीट का है। If you look close to the river, this pipe is 20 feet large. आप जाके पाइप को हाथ लगाओगे, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। If you go touch the pipe, you will feel the cool water within. पाइप को कान लगाओगे, आपको पानी की आवाज भी सुनाई आएगी। If you put your ear to the pipe, you will hear the water within. लेकिन आपको प्यास लगे तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। But if you are thirsty, you can't drink from that pipe. तो 20 फीट का पाइप बाद में 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 1 फीट ऐसा छोटा छोटा होता जाएगा। The pipe keeps reducing as it gets closer, 10 feet, 5, 1. लेकिन आपकी अनुभूति समान होगी। But your experience of the pipe remains the same. आपको ठंडा ठंडा लगेगा, आवाज भी आएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा। You will feel the cool water, hear the water, but you cannot drink from it. और जब आप घर में आओगे, आपके घर में छोटा सा टेप है, नल है, वो खोलोगे, उसमें से पानी बहेगा, आपकी प्यास वहाँ बुझेगी। But when you come home, there is a tiny little tap in your home. If you turn that tap on, you can drink the water. बिल्कुल ठीक ऐसे ही। फिर क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे को प्यास लगे तो हमको नल को ही बुझा देना पड़ेगा। वो बड़े बड़े पाइप हमारे कुछ काम के नहीं। So if we are thirsty, we need to go to the tap. We cannot; those big pipes are of no use to us. बिल्कुल ठीक ऐसे ही परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा यानी विश्व चेतना है।
लेकिन वो विश्व चेतना ने मुझ तक पहुँचने के लिए जिस व्यक्ति का माध्यम चुना वो माध्यम है मेरे लिए परमात्मा। So the universal consciousness is not a person, but in order to reach me, the universal consciousness had come through a person, and therefore this person was God for me. इसीलिए मैंने उनको परमात्मा मानी। That's why I accepted him as God. और ये जानते हुए कि वो परमात्मा नहीं है, दो पैर दो हाथ शरीर के मेरे शरीर के मनुष्य है। Knowing that he was not a God because he had the same body as me, 2 hands, 2 legs. उनको परमात्मा माना। Despite this, I accepted him as God. क्योंकि वो एनर्जी वो ऊर्जा मेरे को उनके माध्यम से मिली। Because I received the energy through him. इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा यही विषय है, परमात्मा। This is the biggest problem of spiritual development, God. क्योंकि जब तक परमात्मा का कंसेप्ट, परमात्मा की धारणा हमारी क्लियर नहीं होती ना, तब तक हम परमात्मा तक कभी पहुंच नहीं सकते। Because until we are clear about the concept and the meaning of God, we cannot reach God. दूसरा आप देखो, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। Nobody has said that I am God. किसी ने कहा है क्या? नहीं कहा है। Has anyone said this? They haven't. किसी ने कहा मैं परमात्मा का संदेश वाहक हूँ, किसी ने कहा परमात्मा का मैं पुत्र हूँ, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा किसी ने। People have said that they are the messengers of God, that they are the son of God, but no one has said I am God. यही बात मैंने एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी में लंदन में कही। I said this once at the Theosophical Society in London. एक अंग्रेजी में मेरे को कहा, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है मैं भगवान हूँ। And an Englishman said in the Gita, Krishna, Lord Krishna has said that I am God. मैंने उस अंग्रेज को कहा, पहली बात तो गीता श्री कृष्ण ने लिखी है। I told him, first of all, the Gita was not written by Lord Krishna. गीता लिखी है वेद व्यास। The Gita was written by a Ved named Vyas. और वेद व्यास श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, इसलिए उन्होंने भगवान लिखा। And Ved Vyas used to believe that Krishna was God, and therefore he wrote that. देखिए, कुछ जो पुस्तकें रहती हैं, उसमें आधा सत्य रहते हैं। Some books contain only half truths. आधा लिखा रहता है और आधा वो अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं। Half of it is what is written, and the other half is the sentiment. कैसे घटित होता है मैं आपको बताऊँ। I'll tell you how this happens. जैसे मान लो आप में से कुछ लोगों ने राजकोट का महाशिविर अटेंड किया होगा। Let's say that some of you attended the workshop at Rajkot, उसके बाद में आपने एक पुस्तक लिखी and then you wrote a book about it, और पुस्तक में आपने लिखा कि वहाँ गुलाबों की वर्षा हुई थी। and you wrote that there was a rain of rose petals there. फिर दूसरा एक और साधक आपको मिला, वो बोला मैं गया था राजकोट शिविर में, तुमने झूठ लिखा है, कोई गुलाबों की वर्षा नहीं। And then you meet someone else who was also at the Rajkot workshop, and he will say, you have written lies, there was no rain of rose petals there. फिर जो किताब लिखने वाला साधक है ना, वो बोलेगा वहाँ पे गुलाब की खुशबू आई थी ना, तो गुलाब की खुशबू आई थी सच है, और गुलाब के फूल बरसे थे, ये उसकी कल्पना है। And then the person who wrote the book will say, did you not get the smell of roses there? That is the truth. And then I described it as a shower of rose petals. लेकिन सत्य के साथ जब कल्पना को जोड़ देते हैं ना, तो वो असत्य हो जाती है। But when you attach imagination and fiction to the truth, then it becomes a falsehood. इसलिए जो भी माध्यम है, सब माध्यमों ने अपने आप को माध्यम माना, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। And therefore, all mediums have considered themselves mediums. None of them have said, I am God. अब मैंने माध्यम को क्यों परमात्मा माना? Why did I accept a medium as God? और क्यों माध्यमों को लोग परमात्मा मानते हैं? And why do people accept the mediums as मैं आपको God? थोड़ा समझाता हूँ। Let me explain this to you. जैसे कल्पना करो, एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर एक मेरीगोल्ड झूला गोल चक्री घूम रही है। Imagine that there is a playground and there is a merry-go-round going round and round in it. एक माँ अपने बच्चे को लेके वहाँ गई A mother goes there with her child और उसके बाद में बच्चे को चक्री में बिठाया, and she puts her child on the merry-go-round. चक्री गोल गोल घूम रही है। It's going round and round. आपने जाके माँ को पूछा तुम्हारा लड़का कहाँ है? And you go and ask the mother, where's your child? तो माँ चक्री की तरफ उंगली दिखाई दी, चक्री यानी बच्चा, बच्चा यानी चक्री, ये उसकी धारणा है। And the mother will point at the merry-go-round. The merry-go-round represents her child, the child is the merry-go-round. एक्चुअली बच्चा चक्री है क्या? नहीं, चक्री में बच्चा है। Is the child the merry-go-round? No, the child is on the merry-go-round. आप अगर बच्चे को पूछो तू चक्री है क्या, बच्चा बोलेगा नहीं मैं चक्री नहीं, मैं चक्री में हूँ।
If you ask the child, are you the merry-go-round? The child will say, no, I'm not the merry-go-round, I'm on the merry-go-round. बिल्कुल ठीक ऐसा ही आप किसी भी माध्यम को बोलो तू परमात्मा है, वो तुम मानो परमात्मा, लेकिन वो अपने आप को परमात्मा नहीं मानेगा, वो बोलेगा मैं परमात्मा मैं हूँ, मैं परमात्मा नहीं। In the same way, if you ask a medium, are you God? He will say, no, I'm not God. I am channeling God, I'm a medium of God, but I'm not God. यही कारण है आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान। That is why no one has said, I am God. क्योंकि जो भी माध्यम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त किए वो सभी जानते हैं कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। Because any medium who has attained God knows that no body can be God. परमात्मा एक विश्व चेतना है, वो कल भी थी, वो आज भी और कल भी रहेगी। God is a universal consciousness which existed in the past, exists today, and will exist in the future. कोई भी व्यक्ति अपने आप को रिक्त कर ले, अपने आप को खाली कर ले, उसके भीतर से परमात्मा का ऊर्जा बहने लग जाता है। Any individual who empties himself out will allow this energy to flow through him. वो आप भी कर सकते हैं। You can do this too. आपके माध्यम से भी परमात्मा प्रकट हो सकता है। God can flow through you as well. आवश्यकता है मैं को विसर्जित करने की। What is needed is to destroy the I in you. आवश्यकता है शरीर में रहते हुए शरीर भाव को छोड़ने की। What is required is to give up the association of the body while you are still in the body. जैसे आप आपका शरीर भाव छोड़ देते हो, ऑटोमेटिकली आप रिक्त हो जाते हो, आप खाली हो जाते हो। As soon as you give up the association with the body, you will automatically become empty. और आप खाली रहने वाले आपके ही भीतर से, आपके ही अंदर से परमात्मा का विश्व चेतना बहने लग जाता है। And as you become empty, the universal consciousness of God will start flowing through the empty body. और यही हुआ है। And this is what has happened. एक्चुअली माध्यमों के बीच में से परमात्मा का शक्ति इतने जोर से बहने लग गया, इतने तेजी के साथ बहने लग गया कि माध्यम के शरीर का अस्तित्व ही नजर नहीं आता। The energy of God started flowing through the mediums so strongly that the identity of the body of these mediums was lost. देखने वाले को चैतन्य दिखता था, शरीर दिखता ही नहीं। The observers could only experience this universal consciousness. They were unable to see the body. इसलिए फिर लोग माध्यम को ही परमात्मा कहने लगे। And that is why people began to accept these mediums as God. यही तो एक क्षण मेरे जीवन में भी आया। This has happened in my life as well. जब शिव बाबा के माध्यम से मुझे ऊर्जा प्राप्त हुई, मुझे एनर्जी प्राप्त हुई, तो मुझे शिव भगवान नजर नहीं आए। When I acquired the energy through Shiv Baba, I could not see him at all. ऐसा लग रहा था साक्षात शिव हिमालय में खड़े हैं और उनके सम्मुख मैं खड़ा हूँ। It felt as if Lord Shiva himself was standing there in the Himalayas and I was standing in front of him. क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव, चैतन्य का प्रभाव इतना अधिक था कि बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। Why was this? Because the flow of energy was so excessive that I could see nothing else. इसलिए एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मानकर आध्यात्मिक प्रगति हुई। That is why by accepting a living person as God, I progressed spiritually. जितने भी प्रगति हुई, जितना भी प्रोग्रेस हुआ, केवल उनके गुरु चरण पे चित्त रखते हुए है। All of the progress that I have made by placing my attention and focus on my Guru's feet. आज आपको एक रहस्य बताता हूँ, गुरु के आप कहीं पे भी चित्त रखो, गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। Let me tell you a secret. You can focus your mind on any part of the Guru. It makes no difference to the Guru. आप गुरु के सर के ऊपर चित्त रखो, आप गुरु के गले के ऊपर चित्त रखो, आप गुरु के पेट के ऊपर चित्त रखो, आप गुरु के घुटने के ऊपर चित्त रखो, आप कहीं पे भी चित्त रखो, गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। You can focus your attention on his head, on his chest, on his stomach, on his knees. It makes no difference to the Guru. जैसे आप गुरु चरण पे चित्त रखते हैं, उसको भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। But if you place your attention on the Guru's feet, again it makes no difference to him, but it makes a huge difference to you. क्योंकि जैसे गुरु चरण पे आप चित्त रखते हैं, आपका अहंकार, आपका मैं पूर्णतः विसर्जित हो जाता है। Because if you put your attention on the Guru's feet, then your arrogance, your I is completely destroyed. और जैसे गुरु चरण पे चित्त रखते हैं, आपको उन आत्माओं की, उन साधकों की सामूहिकता मिल जाती है, जिनका चित्त
गुरु चरण पे है। And when you place your attention at the feet of the Guru, you are joined with the collectivity of all of those meditators whose attention is also on the feet of the Guru. दूसरा भौतिक रूप में समझा ना, समझने का एक पाइप है, इस पाइप में से पानी बह रहा है। At the physical level, let's understand this. Assume there is a pipe with water flowing through it. और आप एक ऐसे पाइप है जिनको उस पानी की जरूरत है। And you are a pipe that requires this water. तो आप इस पाइप को यहाँ पे लगाओ, पानी मिलेगा क्या? If you touch the pipe on the body, will you get water? No. आप पाइप को यहाँ लगाओ, आपको पानी मिलेगा क्या? If you touch the pipe lower down on the other pipe, will you get the water? No. आप आपके पाइप को यहाँ लगाओ, पानी मिलेगा क्या? नहीं। If you touch it even further lower down the pipe, will you get the water? No. आपको अगर आपके पाइप में पानी रिसीव करने का है तो उसका जो बॉटम है उससे आपका टॉप मिलना चाहिए, तब जाकर के आपके माध्यम से उसका पानी बह सकता है। If you want to get the water, you need to attach your pipe, the top of your pipe, to the bottom of the other pipe. Align the mouths. That's when you get water. आपका चित्त जब गुरु चरण में होगा तभी उसकी एनर्जी, तभी उसकी ऊर्जा आप ग्रहण कर सकते हो। In the same way, when your attention is on the Guru's feet, only then can you get all of his energy. गुरु चरण वो स्थान है जहाँ हम झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। The feet of the Guru is that place where we are obliged to bow down. और अधिकतम हम जहाँ झुक सकते हैं उतना ही हमारा अहंकार, उतना ही हमारा ईगो, उतना ही हमारा मैं विसर्जित होने को कारण बन जाता है। And the more you bow down, the more your arrogance and the I within you will be destroyed. गुरु चरण वह स्थान है जो हमारे भीतर के मैं को विसर्जित करता है। The feet of the Guru is that location which will destroy the I within you. मैं गुरु का सानिध्य कितने दिन मिला, कितने क्षण मिला, उसको कोई महत्व नहीं है। There is no importance to how long you were able to attain the company, the proximity of a Guru. महत्व है आपने कितने क्षण उस गुरु चरण पे चित्त रखा। What is important is how much time you spent focused on the feet of the Guru. अब देखो मेरे को तो चंद दिन मिला था, कुछ दिन मिला था, उसके बावजूद भी वो आज तक मुझे चल रहा है। Now look at me, I only got a few days with the Guru, and even then that has lasted me all of this time. गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु ज्ञान का प्रवाह है। The Guru is not a body, the Guru is a flow of consciousness and knowledge. अगर हम ज्ञान के साथ में उस ज्ञान का कार्य कर रहे हैं तो हम उसके साथ हैं। If we do the work of this knowledge, this flow, then we are with the flow. गुरु के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। Then there is no need to run behind the Guru. आवश्यकता है गुरु कार्य करने की। The need is to do the work of the Guru. जो गुरु कार्य करता है उसके पीछे गुरु है। Those who do Guru Karya, the Guru will go after them. मुझे याद है जब मैं 20 साल 22 साल पहले मुंबई में आया था तो एक बार कार्यक्रम करके वापस भागते रहे हिमालय। I still remember when I first came from the Himalayas, I conducted one workshop and then I ran away again. मैंने गुरु को कहा मुझे वहाँ से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सब लोग मुझसे ग्रहण करते हैं, मेरे को नहीं रहना वो समाज। I told my gurus, I don't get to learn anything there. Others learn from me. I don't want to live there. तो उन्होंने हमें समझाया कि अगर तुम्हें छोड़ करके आओगे तो हमारा कार्य कौन करेगा? My gurus explained to me that if you leave that work and come here, then who will do our work? ये विश्व स्तर का कार्य है, विश्व में जाना ही होगा। This is a work that needs to be done at the level of the whole world. Someone needs to go into the world. रही बात दूर रहने की, तो तुम दुनिया के कोई भी कोने में रहो, हमारा चित्त तुम्हारे पे बराबर होगा ही। They said that you can be in any corner of the world, but our attention will be focused on you. तो उन्होंने खूब सुंदर उदाहरण से समझाया कि माँ जब रोटी बनाती है ना, तो रोटी बनाते समय जो लड़का छाती में बैठा है उसके बारे में नहीं सोचती, वो जो दूर खेत में काम कर रहा है उसको रोटी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी उसका विचार करती है। They explained it to me with a beautiful example. They said that a mother who is making chapatis will not think about the son who is sitting right next to her. She will think and worry about the son who is working hard in the fields far away, whether the chapati will get to him in time. ठीक उसी प्रकार से आप विश्व के कोने में कोने चले जाओ, हमारा चित्त हमारे ऊपर रहे, सदैव हम तुम्हारे साथ रहे। In the same way, no matter which corner of the world you go to, our attention will always be focused on you. और सचमुच मैं विश्व के किसी भी कोने में चले जाऊँ,
सानिध्य सदैव मेरे साथ रहता ही है। And it is true, no matter where I go in the world, I feel like their proximity is always, I feel their proximity. अभी भी यहाँ बैठा हूँ ना, अभी भी गुरु मेरे साथ में, गुरु सानिध्य मेरे साथ है। Even now, when I am sitting here, I feel the proximity of my gurus. उनके सानिध्य में जो कुछ बता रहा हूँ, I'm saying things in their proximity. तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहले परमात्मा क्या है ये जानने की अत्यंत आवश्यकता है। Therefore, it is extremely important to understand what God is in order to progress spiritually. इस विषय में मैंने खूब अलग-अलग अध्ययन किया है। I have made several different observations on this topic. देखिए, जैसे मान लो आप किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने को जाते हैं, Let's say that you go to a temple to visit a god. उस मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा रखी हुई मान लो, Assume that there is a statue of Krishna in this temple. और उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए आप 5 घंटे लंबी लाइन में लगाते हैं, And you have spent 5 hours in a long line in order to go see the statue. और 5 घंटे लंबी लाइन लगाने के बाद में आप जाकर के मूर्ति के सामने पहुंचते हैं, And only after waiting for 5 hours in a long line, you finally get to the statue. और पहुंचने के बाद में कुछ मिनट के अंदर ही पुजारी आपको हटा देगा, खसको खसको खसको, And once you get there, within a few minutes, the priest will say, move on, move on. और बाद में आप आपके घर चले आते हैं। And then you go home. अरे बाबा, आप मनुष्य हो, आपको बुद्धि है, तो बुद्धि से सोचो ना, ऐसे किसी स्थान पे जहाँ 5 घंटे लंबी लाइन लगा के जाना पड़ता है, आप जाओगे क्या? You are a human. You have an intellect. Think with your mind. If you have to go somewhere, wait for 5 hours, will you go? जहाँ पे आपको कोई बुलाता नहीं है, आपको भगा दिया जाता है, ऐसे स्थान पे जाओगे क्या? Where no one has asked you to come, in fact, someone sends you away, will you go? लेकिन फिर भी कोई मित्र आकर फिर 8 दिन बाद आपको कहता है, चलो वो कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, आप तैयार रहते, क्यों तैयार होते हो? But even then, after 8 days, if a friend comes and says, let's go visit that temple, you'll be ready to go. Why is this? एक बार शांति के साथ इसके ऊपर विचार करो, Think calmly about this. शांति के साथ इसके ऊपर सोचो। Think about this in peace. वो कृष्ण का दर्शन करके आपको कुछ भी शारीरिक फायदा नहीं होता। Visiting the statue of God has not given you any physical benefits. आपको शारीरिक कंफर्ट कुछ नहीं मिलता। You have received no physical comforts. 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, 5 घंटे भीड़ के धक्के खाने पड़ते हैं। You have to stand in a queue for 5 hours. You have to get pushed around for 5 hours. आपको भगा दिया जाता है। You are shooed away from there. फिर भी वहाँ क्यों जाते हो? And yet you go there. इसका अर्थ है वहाँ शरीर को कुछ भी नहीं मिलता है। So you get nothing for the physical body there. जो कुछ मिलता है वो आपके आत्मा को मिलता है। What you get there is something for the soul. आत्मा सुख मिलता है, आत्मा आनंद मिलता है। You get peace within your soul. You feel joy within your soul. लेकिन थोड़ा सोचो, क्या मंदिर के कारण मिलता है? But is this because of the temple? क्या मूर्ति के कारण मिलता है? Is this because of the statue? क्या कारण है कि आपको आत्म सुख का अनुभव होता है? Why is it that you feel peace there? इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की। I have also observed and researched this topic. इसी संत ने, इसी महात्मा ने अपने भीतर बहने वाली अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा करते समय उस मूर्ति में प्रवाहित कर रही थी। Some great soul had at some point of time channeled his inward-looking energies into the statue at the time of the ceremony of giving life to the statue. अपने जीवन भर की तपस्या का साधना से प्राप्त चैतन्य उस मूर्ति में प्रवाहित करके रखा था। He had transferred all of his power that he had acquired through years of practice and penance into this statue. और आपने जैसे एक क्षण के लिए उस मूर्ति के दर्शन किए, आप अभी अंतर्मुखी हो गए। And in that moment, when you lay your eyes on that statue, you also start looking inwards. लेकिन ये अंतर्मुखी होना अगर आपको ध्यान करके सीख जाओ तो मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं। But if you learn how to look inwards through meditation, then you don't need that statue. परमात्मा आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है। मूर्ति के माध्यम से आप अंदर वाले परमात्मा तक पहुँचे, इसलिए अच्छा लगा।
God is within you, and through the medium of this statue, you started looking inwards and found that God, and that is why you feel good when you look at that statue. यही की एक घटना आप किसी समाधि स्थल पे जाते हो तो भी होती है। The same thing would happen if you visit the grave of a Samadhist guru. इसी समाधि स्थल पे वह शरीर रखा हुआ है जो शरीर अपने जीवन काल में अंतर्मुखी था। At such a grave, you find the physical body of a guru who was in his lifetime connected to hundreds of thousands of souls. जैसे आप समाधि का दर्शन करते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आप अपने भीतर के परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। As soon as you lay eyes on such a grave, you start looking inwards and see the God within you. ऐसी की ऐसी घटना जीवंत गुरु के सामने भी घटित होती है। The same thing also happens in front of a living guru. जीवंत गुरु भी अंतर्मुखी स्थिति में रहता है। A living guru is also in an inward-looking state. इसी कारण जैसे आप उसके सानिध्य में जाते हैं, जैसे आप उसका दर्शन करते हैं, आप वो भी अंतर्मुखी हो जाते हैं। That is why when you are in the proximity of a living guru, when you lay eyes on a living guru, you also start looking inwards. मेरी शुद्ध इच्छा है कि आप स्वावलंबी हो जाएं। It is my pure desire that you become independent. आपको अंतर्मुखी होने के लिए किसी जीवंत गुरु की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। You should not require the living guru to go inwards. आपको अंतर्मुखी होने के लिए किसी समाधि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। That you should not require to go visit the grave of any other guru in order to go आपको inwards. अंतर्मुखी होने के लिए किसी मंदिर की, किसी देवता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। That you should not need any god, any temple in order to go inwards. ये इस अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, हिमालय में जितने भी गुरु अंतर्मुखी है वो स्वावलंबी है। I am telling you this on the basis of my experience that in the Himalayas, the gurus there are all independent. वे किसी जीवंत गुरु पे डिपेंड नहीं है। They are not dependent on any living guru. वे किसी समाधि स्थल पे डिपेंड नहीं है। They are not dependent on the grave of any वो guru. किसी मंदिर या मूर्ति पे डिपेंड नहीं है। They are not dependent on any statue or temple. वो अंतर्मुखी होना सीख गए हैं। They have learned to look inwards. उसी अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूँ, आप भी अंतर्मुखी होना सीख जाओ। On the basis of this experience, I am telling you, learn to become परमात्मा independent. आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके अंदर है, केवल आपको अंदर जाने की आवश्यकता है। God is within you. All that is needed is for you to look inwards. दूसरा, हम कोई भी माध्यम को अपनाएं, उस माध्यम में भौतिक दोष तो होंगे ही। Any medium that we accept will have its own physical form. देखिए, इस प्रकार से चैतन्य पाइप में से बहता है ना, ठीक उसी प्रकार से माध्यम के माध्यम से परमात्मा का चैतन्य बहता है। Just like the water flows through a pipe, the universal consciousness flows through a medium. अगर पाइप लोहे का होगा तो उसको जंग लगेगी। If the pipe is made of iron, it can rust. प्लास्टिक का होगा टूटेगा। If it is made of plastic, it can break. कपड़े का होगा फटेगा। If it's made of cloth, it will tear. इसी प्रकार से समय समय पे परमात्मा जिन माध्यमों के माध्यम से प्रकट हुआ है, वो माध्यम के शरीर के दोष उसके साथ थे ही और होंगे ही। In the same way, the physical body through which God manifests itself will have its own flaws and faults. आप थोड़ा सोचो ना, मैं हिमालय में सालों तक रहा हूँ। Think about this for a while. I lived in the Himalayas for several years. और ऐसे ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहा जिन्होंने सालों तक कोई मनुष्य को देखा ही नहीं। And I lived in the proximity of gurus who had seen no other humans for years. तो आप सोचो ना, उसका व्यवहार कैसा होगा, So imagine how his behavior must be, उसका बर्ताव कैसा होगा, how his behavior is, उसकी आदतें कैसी होंगी। what his habits are like. यानी एकदम आपके भाषा में कहें तो एक जंगली वन मनुष्य की तरफ प्रकृति के माध्यम से एनर्जी को ग्रहण करना, चैतन्य को ग्रहण करना, इतना कठिन होगा। So if I speak in your words, he was like a wild person. Imagine how it must be to assume energy from him. उनके सानिध्य में रहते हुए उन सब बातों पे चित्त न रखते हुए केवल उनके ऊर्जा पे चित्त रखा, उनके चैतन्य पे चित्त रखा, उनके ज्ञान पे चित्त रखा, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए। But in their company, I did not put my attention on their behavior or their physical form. I focused only on the energy that was flowing through them.
And that's why I was able to absorb this energy and reach this state today. सदैव ये याद रखता था कि मेरे गुरु ने मुझे इनके पास क्यों पहुंचाया है। I used to always remember, why did my guru bring me to this person? और जिसके लिए पहुंचाए मेरा ध्यान, मेरा चित्त केवल उसी ज्ञान के लिए रहता था, बाकी सब बातों को ध्यान नहीं देता। I only focused on the reason why I had reached this specific guru and on nothing else. इसलिए गुरु से ज्ञान ग्रहण करना भी बहुत कठिन बात है। That's why I could gain the knowledge from the guru. इसलिए जीवंत गुरु के सानिध्य में रहना भी कठिन है। That's why it's difficult to live in the proximity of a living guru. एक्चुअली वो रखता है रहता है, उद्देश्य कुछ और रहता है। He could be acting in a certain way, but his objective could be entirely different. लेकिन मेरा सदैव विश्वास रहा है गुरु के माध्यम से अहित कुछ हो ही नहीं सकता। But I firmly believe that nothing bad can be the objective of any guru's behavior. गुरु सिलाई मशीन है, वो कैंची का काम कभी कर ही नहीं सकता। The guru is like a sewing machine. He cannot function as a pair of scissors. आप बताओ ना, सिलाई मशीन कभी काट सकती है या नहीं काट सकती? Can a sewing machine cut? It cannot. ठीक इसी प्रकार से गुरु कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता, उसके माध्यम से कहीं अहित हो ही नहीं सकता। The guru can never do bad for anyone. It is not possible for him to commit anything bad for anyone. तो कभी कभी तो लगता है कि गुरु और डॉक्टर एक समान है। Sometimes I feel like the guru is like a doctor. देखिए, कोई किसी व्यक्ति का पेट काट दे तो वो मर्डर कहलाएगा। If someone cuts the stomach of someone, he will be called a murderer. लेकिन डॉक्टर काटेगा तो ऑपरेशन कहलाएगा। But if the doctor does it, it's called an operation. तो जब पेट को काटने का रहता है तो डॉक्टर कभी खड़ा काटता है, कभी आड़ा काटता है, कभी तिरछा काटता है, यानी कैसा काटता है वो उसके हाथ में। If the doctor needs to perform an operation on the stomach, he could cut laterally, he could cut horizontally, he can decide how he needs to cut. कैसा भी काटते हुए उसका उद्देश्य एक ही रहता है, आपके पेट की बीमारी ठीक करना। But his objective, no matter how he cuts, is to cure your stomach. ठीक उसी प्रकार से गुरु का व्यवहार कुछ भी हो, कुछ भी दिखे, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति करना, बस और कुछ नहीं। So no matter how the guru behaves, do not focus on that. Be assured that his objective is one and only one, your spiritual progress. तो वो व्यवहार क्या करता है, बातें क्या करता है, कुछ लेना देना नहीं है। How he behaves, how he talks, none of that is important. दूसरा, उसका रंग रूप क्या है, उसका आकार प्रकार क्या है, उधर भी ध्यान मत दो। Also, do not focus on his physical appearance, his form. गुरु एक व्यक्ति नहीं है। The guru is not a person. गुरु साक्षात शक्ति है। The guru is energy manifested. जिसके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी हुई है। With whom hundreds of thousands of souls are joined. जब भी कभी आपके पुण्य कर्म से आपको उसका सानिध्य प्राप्त हो तो उस सानिध्य का उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो। If you have the opportunity to achieve the proximity of the guru because of your good karma, then use that opportunity to go inwards. कई लोग गुरु का सानिध्य का उपयोग अपनी समस्याएं दूर करने के लिए करते हैं। Several people use the proximity of a guru in order to resolve their problems. अपने प्रॉब्लम दूर करने के लिए करते हैं। In order to find solutions to their problems. जब आप गुरु सानिध्य में आपका चित्त समस्याओं में ले जाते हैं, आपके प्रॉब्लम पे लेके आते हैं, तो फिर आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते। If in the proximity of a guru, your attention is focused on your problems, then you are not looking inwards. एक बात अवश्य याद रखो, जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं, जितने भी जीवन के प्रॉब्लम है, सब आपके शरीर से संबंधित है। Always remember, all of the problems in your life are associated with your physical body. शरीर नहीं रहेगा तो समस्याएं नहीं रहेंगी। If there is no body, there will be no problems. शरीर नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। If there is no body, there will be no problems. यानी सारी समस्याएं शरीर से संबंधित है। All of the problems are associated with the body. आप अगर गुरु के सानिध्य में अंतर्मुखी होना सीख जाओ तो आपके शरीर का भाव धीरे धीरे कम होगा। If you learn to look inwards in the proximity of a guru, then your body association will reduce gradually. और जैसे जैसे शरीर भाव कम होगा, वैसे वैसे आपके भीतर आत्म भाव जागृत होगा।
And as your association with the body reduces, your association with the soul will increase. समस्याएं होंगी लेकिन महसूस नहीं होगी, You will have problems, but you won't feel them क्योंकि आपका शरीर बहुत पूर्णतः समाप्त हो चुका होगा। because your association with the body will have ended completely. दूसरा यहाँ ध्यान रखने की बात है, ध्यान सीखने के लिए, ध्यान करने के लिए उम्र का कोई अंतर नहीं पड़ता है। Another thing to note, age does not play any role in learning to meditate and in meditating. आपका समर्पण भाव कितना है, आपकी शुद्ध इच्छा कितनी है, इसी के ऊपर आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। Spiritual progress is dependent on your desire, on your ability to surrender. एक बार 90 जैन मुनियों का मैंने पालीखाना में शिविर किया, Once I held a workshop in Palikhana for 90 monks. और वो समाप्ति के बाद एक तलहटी करके जगह है, उस मंदिर में हमने ध्यान का कार्यक्रम रखा। At the end of the workshop, we held a meditation session at a place called Talhati. तो एक खूब बूढ़ी आदमी व्हील चेयर पे आके पूरा उसने शिविर अटेंड किया। There was a very old female monk who had attended this shivir on a wheelchair. और वो व्हील चेयर पे उस मंदिर में आई थी। She even came to the temple in her wheelchair. जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ, उसने कहा स्वामी जी 50 साल से इस मंदिर में मैं आ रही हूँ, इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा आज मुझे पता चली। She said, Swamiji, I've been visiting this temple for the last 50 years, but today for the first time I've realized the energy in this temple. देखिए, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि आप कितने भी वृद्ध हो, आप कितने भी कमजोर हो, आप कितने भी बीमार हो, आप कितने भी अशक्त हो, इससे इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। I give you this example to explain that no matter how old you are, no matter how weak you are, no matter how ill you are, none of this matters to meditation. क्योंकि आत्मा आपकी कभी बूढ़ी नहीं होती, Because the soul never gets old. आपकी आत्मा कभी अशक्त नहीं होती, The soul never gets weak. आपके आत्मा को कभी कोई बीमारी नहीं होती, The soul never gets ill. आत्मा कभी अपंग नहीं होती, Your soul can never be आत्मा कभी challenged. कमजोर नहीं होती। Your soul cannot be weak. ये सारे आपके शरीर के दोष हैं, इससे परे आपकी आत्मा है। These are all faults of your body. Your soul goes beyond this. तो आपको अगर इच्छा करनी है तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ हो सकता है। So if you have the pure wish, your soul can connect to God. इसलिए आपका शरीर किस स्थिति में है, जवान है कि बूढ़ा है, इधर बिल्कुल ध्यान मत दो। And therefore do not focus on whether your body is old or young. तो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए सबसे पहली बात परमात्मा क्या है ये समझने की आवश्यकता है। So first of all, for spiritual progress, understand what is God. परमात्मा एक विश्व चेतना है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। God is a universal consciousness which existed in the past, exists today, and will exist in the future. और जिस माध्यम से बहती है उस माध्यम को सद्गुरु कहते हैं। And the medium through which it flows is called the Sadguru. सद्गुरु इस काल के वर्तमान काल के परमेश्वर है, परमात्मा है। The Sadguru is the God of the present time. ऐसा मैंने माना तब जाकर के आध्यात्मिक प्रगति हुई। When I believed this, my spiritual progress happened. लेकिन इस समय याद रखने का है कि परमात्मा गुरु नहीं है, लेकिन उसको मानने का है। It's important to note that the Guru is not God, but we need to believe this. देखिए, जिस प्रकार से नल की टेप है, नल की टेप नदी नहीं है, लेकिन हमको नदी का पानी पीने के लिए टेप को ही दूर लगाना पड़ेगा। The tap is not the river, but in order to drink water, we need to use the tap. ठीक इसी प्रकार से समझ लो, जो माध्यम है जिसके भीतर से परमात्मा बहता है, हमको उस माध्यम के आकार पे, प्रकार पे ध्यान नहीं देने का, हमारा चित्त उसके एनर्जी पे होना चाहिए, उसकी ऊर्जा पे। In the same way, the medium through which we get the energy, we should not focus on his shape, his form. We should focus only on the energy that is flowing through him. दूसरा विषय है धर्म। The next topic is religion. देखिए, हम जिसको धर्म समझते हैं कि नहीं, वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना पद्धति। What we think of as religion is actually not religion. They are only methods of worship. देखिए, आपकी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, मेरी उपासना पद्धति अलग हो सकती है। Maybe your method of worship is different, my method of worship is different. लेकिन हम दोनों का धर्म एक ही है, हम दोनों मनुष्य है, इसलिए मनुष्य धर्म है, मनुष्य धर्म है। But our religion is the same. We are both humans, and therefore our religion is humanity. कई सालों से कई उपासना पद्धतियों का अध्ययन हिमालय के गुरु कर रहे हैं।
The gurus in the Himalayas have been studying several religions for several years now. सभी उपासना पद्धतियाँ उपदेशों पे आधारित है। All of these methods of worship rely on specific messages. आप सभी उपासना पद्धतियों का अध्ययन करो ना, सब में एक ही तो बात कही है, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। You can observe the different methods of worship. They all say the same thing: do good things, don't do bad things. अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। ये करते 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 आपके भीतर के आत्मा को जागरूक करने की, आपको मनुष्यता लाने की प्रयास है। These are all attempts to awaken the humanity within you by doing good things and by not doing bad things. ये प्रोसेस इतनी बड़ी है कि उसके अंदर आपका जीवन ही समाप्त हो जाए। However, this process is so slow that your life ends before this happens. दूसरा, कोई भी उपासना पद्धति ऐसी नहीं जिसमें सभी लोग अच्छे हों। There is no method of worship where every single follower is a good person. सभी उपासना पद्धति में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। Every method of worship has its good people and its bad people. क्योंकि वो बाहर से उपदेश है, लोग इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकालते हैं। Because the instructions come from outside, people listen through one ear and throw it out through the other ear. इसलिए हिमालय के गुरुओं ने इसका एक रास्ता चुना, इसका एक मार्ग चुना जो अनुभूति पे आधारित है। And therefore, the gurus in the Himalayas found a way out that is based on experience. इसलिए समर्पण ध्यान संस्कार में कोई उपदेश नहीं। And therefore, in the values of Samarpan meditation, there is no message. क्या करो, क्या मत करो, कुछ भी कहा गया नहीं। There are no instructions, do this, do that, there is nothing. दूसरा, कुछ भी छोड़ने के लिए, कुछ भी तोड़ने के लिए, कुछ भी फोड़ने के लिए नहीं कहा है। In addition, there are no rules about you must do this, you must not do this. आप जैसे हो उसको स्वीकार किया है। We accept you exactly as you are. और आपको केवल 30 मिनट अपने जीवन में अपने आप को देने के लिए कहा गया है। And the only thing you have to do is give yourself 30 minutes every day. और 30 मिनट देते देते आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिसको आध्यात्मिक स्थिति कहते हैं। And in these 30 minutes, you reach that state that is called a spiritual state. देखिए, आध्यात्मिक स्थिति ये स्थान है और इस स्थान तक पहुंचने की सीढ़ियां सब उपासना पद्धति हैं। This state above is the spiritual state, and all the ladders that go up to this level are the different methods of worship. आप एक सीढ़ी पे पैदा हुए, मैं एक सीढ़ी पे पैदा हुआ। You will be on one staircase and I will be on another staircase. सब उपासना पद्धतियां सीढ़ी आखिर में जाके यहाँ पहुंचती। But all of these staircases eventually lead to the same spiritual state. और यहाँ जो पहुंचे हैं, उन्होंने एक ही बात कही है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। And whoever has reached this state always says the same thing: there is only one God. सबका मालिक एक है। The master of everyone is one and the same. लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद में सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। And once you get to this stage, the staircases end. उपासना पद्धति का कोई महत्व नहीं रहेगा। There is no importance to the method of worship anymore. इसलिए जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है आप समझ सकते हैं। So you can understand where someone is talking from. अगर वो किसी विशेष उपासना पद्धति के बारे में बोल रहा है तो समझ लो वो आज तक पहुँचा हुआ नहीं है। If he is talking about any specific method of worship, then you know that he has not reached the वो stage. केवल सीढ़ी पे बैठा हुआ है। He is on the staircase. और जो उस स्थान तक पहुँचा है जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं तो वो किसी उपासना पद्धति विशेष की बात ही नहीं करेगा। And anyone who has crossed the staircase and reached the final stage will never talk about any specific method of वो worship. केवल अनुभूति की बात करेगा। He will only talk about experiences. देखिए, परमात्मा यानी विश्व चेतना, God is universal consciousness. धर्म यानी मनुष्य धर्म, Religion is humanity. सद्गुरु यानी वो माध्यम जिसके माध्यम से परमात्मा का अनुभूति होता है। Sadguru is that medium through which we experience God. और ध्यान यानी कुछ नहीं करना ध्यान है। And meditation is not doing anything. इसके अंदर कुछ नहीं करने का, शरीर से कुछ नहीं करने का, मन से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने का, अपने आप को रिक्त कर देना, अपने आप को खाली कर देना ध्यान है। Meditation is not doing anything, not with the body, not with the mind. It involves just completely emptying oneself, becoming empty. जैसे आप अपने आप को रिक्त कर देते हो, आपके भीतर से परम चैतन्य बहने लगेगा। As soon as you make yourself empty, universal consciousness will start flowing through you. आइए चले अब हम ध्यान करेंगे। Let's meditate now. देखो, कल के समाधि करने We have to do it just like we did yesterday.
और दूसरे जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाए, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो अपने नंगे पैर जमीन को स्पर्श करें। Those who can sit down, please sit down. If you cannot sit down, then place your bare feet on the ground. दोनों हाथ इस प्रकार से रखो। Hold your hands out like this. दूसरा ना, आप मेरा साथ जितना देते जाओगे उतना मैं समय बढ़ाते जाऊँ। The more you can keep up with me, I will increase the meditation time. मुझे आगे भागना नहीं है, मुझे आपको साथ में लेके करना है। I don't want to run ahead of you, I want to walk with you. तो आप जितने साथ में बढ़ोगे उतनी मेरी स्पीड रहेगी। So the more you are able to keep up with me, that's how much speed I will assume. और अपने मन को पूर्ण एकाग्र कर लो। Concentrate your mind. अपने राइट हैंड को अपने तालू भाग पे रखो। Place your right hand on the crown of your head. मनुष्य का स्वभाव है, जहाँ पे हम हाथ रखते हैं वहाँ हमारा चित्त चला जाता है। It is human nature to focus on that part of the body that is touched by the hand. तो आपका भी चित्त आपके तालू भाग पे चला जाना चाहिए। So now your mind should be focused on the crown of your head. अंतर से दबा देके 3 बार क्लॉकवाइज घूमो। Press down lightly and move your hand clockwise thrice. और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आओ। Gradually bring your hand down. मंत्र का उच्चारण करेंगे। Let's chant the mantra. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। चित्त को तालू भाग पे रखकर ध्यान दो।
Let us pray. परमात्मा मुझे आत्म साक्षात्कार करो। Please grant me self-realization. परमात्मा साक्षात्कार करो। परमात्मा मुझे आत्म आपको क्या अनुभूति होगी? Focus your mind on the experiences of your body. Let us pray for the spiritual development of feminine energy. अपने दोनों हाथ आंखों के सामने ला और आंखें धीरे देखो और अपने हाथों की तरफ देखो और आपको महसूस होगा आपके हाथ में कुछ नहीं Hold your hands out in front of your eyes, gradually open your eyes and see that there are cold vibrations coming out of your hand. आपको लगा होगा आत्मा तो एक है तो स्त्री और पुरुष का भेद क्यों किया? You must be thinking that the soul is the same, then why is there a difference between men and women? Why did we pray for feminine energy? आपको बताता हूँ हिमालय में इतने साल घूमने के बाद भी मैंने एक भी स्त्री को वहाँ नहीं देखा। Although I traveled to the Himalayas for several years, I did not see even one woman there. क्या कारण? कारण ये जो भी पुरुष हिमालय में गए ना सब इसी समाज के गए। Why is this? The reason is that all of the men that have gone to the Himalayas have gone from this society. और मनुष्य की एक गलत सोच है कि आध्यात्मिक प्रगति में स्त्री बाधक है। And man has this false belief that a woman is an obstacle to spiritual growth. और यही सोच लेकर के वो हिमालय में गए। And they have taken this thought with them to the Himalayas. और उसी सोच के साथ अपने आध्यात्मिक प्रगति की। And with this thought they have progressed spiritually.
और मेरे ओरा में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, ऐसी इच्छा थी। And they had a desire, a wish that no woman would enter their aura. इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ किसानों के खेत होते हैं, 10 एकड़ अपनी रोटी से एकड़ करते, ठीक उसी प्रकार से वहाँ उनके ओरा है। Just like farmers have pieces of land, the gurus there have their auras. अने एक ओरा, गुरु का ओरा होगा 40 किलोमीटर, तो वो सोचेगा मेरे 40 किलोमीटर के ओरा में कोई स्त्री नहीं आना है। A guru could have an aura of 40 kilometers, for example, and his desire is that no woman enters his aura. लेकिन प्रत्येक गुरु ने ऐसा विचार किया तो उसकी विचार जायज क्यों नहीं होना है? So if every guru has such a desire, then where should all the women go? उसके कारण हिमालय में कोई भी साध्वी नहीं है। That's why there are no female monks in the Himalayas. लेकिन अध्यात्म की एक स्थिति है, उस स्थिति तक पहुंचने के बाद में महसूस होता है कि स्त्री और पुरुष का भेद केवल और केवल शरीर का है। But there is a state of spiritual development after which one realizes that the distinction between men and women is only at the physical body level. और यही सोच लेके मेरे गुरु भी हिमालय में गए। And with this, our gurus also went into the Himalayas. लेकिन एक स्थिति प्राप्त होने के बाद में उनको उनकी गलती नजर आई। And they saw their mistake after they had reached that spiritual stage. फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो गलती हमने हमारे जीवन में की है, वो गलती तुम तुम्हारे जीवन में मत करो। They told me that the mistake that we have made in our lives, you do not make in your life. आध्यात्मिक प्रगति में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों एक हैं। In spiritual progress, men are the same. यही कारण है हमारे यहाँ विश्व में जितने भी सेंटर्स हैं, प्रत्येक सेंटर पे एक स्त्री होती ही है। That's why in all of the centers all over the world there are always women in each center. यहाँ तक कि सेंटर प्रमुख, ट्रस्टी, मैनेजिंग ट्रस्टी, इन सब पोस्ट के ऊपर भी स्त्रियाँ हैं। Even the positions within the center are held by women. और आज विश्व भर में जो समर्पण ध्यान फैला है ना, ये स्त्रियों के कारण ही फैला है। And it is because of women that Samarpan meditation has spread all over the world. वास्तव में क्या है, स्त्री का एक स्वभाव है, वो अपने पास कुछ रह ही नहीं सकती। It is the nature of women not to keep something restricted to themselves. जैसे उसके आध्यात्मिक प्रगति होती है, जैसे उसके आध्यात्मिक प्रगति होती है, वो प्रोग्रेस दूसरों को बांटना चालू करती है। As soon as she attains spiritual progress, she starts distributing this spirituality. तो आज समर्पण ध्यान के प्रचार प्रसार में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। So women have contributed significantly to the spread of Samarpan meditation. और इसकी शुरुआत गुरु माँ ने की। And the start happened with Guru Ma. उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो बलिदान किया, उसके कारण ही आज मैं समाज तक पहुँच पाया। It is because of her sacrifices that I have reached society today. अन्यथा घर पर बिठा के रखते तो नहीं होता। If she had asked me to stay at home, none of this would have happened. और आपको कोई प्रश्न हो तो जल्दी तो पूछो। Now we will have a question and answer session with Deva Setu. Deva Setu is coordinating an internet platform which is called Jetzt Now TV. And on this internet platform, he has interviews with different spiritual masters, teachers, and Deva Setu had the question or had the wish to also interview Swamiji. So that's why now we will have an interview with Deva Setu. In the proximity, we can join this interview, and we're very happy that you're here today. Thank you very much. And the session will start. Hello Swamiji, thank you that I can ask a question. I do Samatha meditation since almost 1 year, and it has become a natural part of my life. I cannot imagine to live without Samatha meditation, but I have one problem with the mantra. I cannot say the word soul, because soul, in my understanding,
to my understanding, is something with a border, something closed up. And if I look inside, then I doesn't feel anything with a border. Then I feel boundless awareness, space. So there may be another translation for Atmas and soul. ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से ध्यान कर रहे हैं, उन्हें मंत्र बोलने में एक तकलीफ होती है। वो बोल रहे हैं कि जब हम सोल बोलते हैं, आत्मा का ट्रांसलेशन सोल बोलते हैं, तो लगता है कि सोल सीमित है, लेकिन वो जब अंतर्मुखी होकर अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ भी सीमित नहीं महसूस होता, उन्हें अंदर खुलापन महसूस होता है। तो क्या आत्मा के लिए कोई और शब्द है, कोई और ट्रांसलेशन है? देखिए, मैं महाराष्ट्र हूँ और मराठी में ये मंत्र मेरे भीतर कई सालों तक चलता रहा। I am a Maharashtrian and this mantra went on inside of me in Marathi for several years. लेकिन बाद में जैसे जैसे साधक संख्या बढ़ती गई ना, वैसे वैसे ये मंत्र हिंदी में हो गया, मेरे पवित्र आत्माओं में एक शुद्ध आत्मा। But as the number of meditators increased, the mantra started to be used in Hindi. तो जो सालों तक मेरे को वाइब्रेशन फील हुए ना, वो हिंदी में बोलने के बाद फील हुए। So the vibrations that I feel in Hindi are strong. क्या कारण एक ही है कि उसके साथ लाखों हिंदी लोगों की सामर्थ्य है। Why is that? This is because hundreds of thousands of souls are reciting this mantra in Hindi. इसलिए आप भी प्रयोग करके देखो ना, आप जर्मनी में बोलते देखो और बाद में आप हिंदी में बोलते देखो, तो हिंदी में जितने वाइब्रेशंस आएंगे उतनी अन्य किसी भी भाषा में आ नहीं सकते। You can try this as well. Meditate with the mantra in German and then try it in Hindi. No other language can give you the amount of vibration that the Hindi mantra can. तो कारण ये कि उसके साथ में लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति है, लाखों लोग हिंदी में उस भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। That is because hundreds of thousands of souls are reciting this mantra in Hindi. All of these souls are attached to this Hindi mantra. आप भी वो सोल के चक्कर में से बाहर निकलो ना, आप भी बोलो मेरे पवित्र आत्माओं में शुद्ध आत्मा। So come out of this problem with the word soul and say it in Hindi. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। I spoke, thank you, this I understand. I spoke with a lot of teachers, spiritual teachers and gurus about the word soul, and most of them, they don't use the word, and because when they look inside there is nothing, and I have the feeling that in the German-speaking area, the word soul becomes a hindrance that people are finding their way to you. ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गुरुओं से बात की है और ये सारे गुरुएं आत्मा सोल शब्द इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं और इन्हें लगता है कि ये सोल आत्मा शब्द किसी के लिए शायद किसी के रास्ते में आ सकता है जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नहीं, लेकिन मैंने बोला ना, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो सोल को छोड़ दो। Like I said, just say it in Hindi. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. Leave the soul alone. Why are you holding on to the word soul? It's not. I'm asking not only for myself. I have the feeling I'm asking for the people who have problems with the word soul. उनको हिंदी में बोलने को प्रेरित करो। Inspire them to also use the mantra in Hindi. दूसरा ये देखो, मैंने इनकॉम तक पढ़ाई की है, अभी मैं अकाउंट की एक एंट्री भी नहीं कर सकता। I have a master's in commerce, but today I cannot do even one accounting entry. जिस विषय पे बोलता हूँ आध्यात्म का, एक पुस्तक में एक लाइन भी मैंने पढ़ी नहीं। I talk about spirituality, but I have not read a single book, not even a single line about spirituality. अच्छा, आध्यात्म पे बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी है, लेकिन जो पुस्तकें लिखी ना वो खुद भी नहीं पढ़ता हूँ। I have written big books on spirituality, but the books that I have written, I haven't read these either. क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि जो अनुभूति हुई है, वो अनुभूति को शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता।
Why don't I read them? Because the experiences that I've had, they cannot be described in words. तो कभी खुद की भी पुस्तक पढ़ने की कोशिश की ना, तो ऐसा लगता है कि अपने को जो अनुभूति 100%, उसका 10% भी मैं देख नहीं पाया। So when I read these books, I have the feeling that I experienced 100% and I was able to put down only 10% of that. इसलिए आप देखो ना, मैं पुस्तकों की कोई बातें नहीं करता क्योंकि पुस्तकें पढ़ी नहीं। That's why I don't talk about any books because I haven't read any books. अब कल से इतनी बातें कर रहा हूँ, सब बातें जो हृदय में आ रहा है पता नहीं है। I've been talking so much since yesterday. I'm only saying what comes into my heart. सब मेरे जीवन के अनुभव है, सब मेरे जीवन की अनुभूतियाँ हैं, जो मुझे जाना है, जिसको मेरा नॉलेज है, केवल वही बात करता हूँ। किसी पुस्तक की बातें नहीं करता, इसलिए निर्जीव ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। These are all things that I've experienced in my life, my experiences, things that I've learned, things that I have known. I don't talk about the non-living knowledge of books. ठीक इसी प्रकार से आप समर्पण ज्ञान के बारे में किसी को बताने जाओ ना, तो ऑटोमेटिकली आपका चित्त किसी निर्जीव पुस्तक पे जीवन का गुरु पे जाएगा। In the same way, when you talk to someone else about samatha meditation, your attention should go on a living guru, not on any non-living book. क्योंकि इसके अंदर निर्जीव पुस्तकों का कोई संबंध नहीं, because it is not associated with non-living book knowledge at all. I understand that the book cannot transfer real knowledge, but on the other hand, the book can be a door to this guru when the book is written by an authentic guru, because I put my awareness to this guru by reading the book. मैं समझ सकता हूँ कि पुस्तकों से जीवित ज्ञान और अनुभूति नहीं मिल सकते, लेकिन पुस्तकें फिर भी एक द्वार हो सकती है जिससे हम गुरु तक पहुँच सके, जिससे हमारा चित्त गुरु तक पहुँचे। नहीं, पुस्तकें गुरु तक पहुँचा सकती है, अनुभूति नहीं करा। Books can get you to a guru, they cannot give you experience. अगर आपने गाय का चित्र देखा है तो आप गाय को पहचान सकते हो। आपने पुस्तक में गाय का जानकारी दिया है तो आप गाय का जानकारी लेके अगर कोई गधा और गाय चल रहे हैं तो आप पहचान सकते हो गधा कौन सा गाय कौन सा है। लेकिन गाय का दूध पीने की इच्छा हो तो पुस्तक की गाय दूध नहीं पिला सकती। If you've seen the picture of a cow in a book, you can recognize a cow. If you've read a description of a cow, when you see a cow and a donkey walking side by side, you know which is the cow. But if you want to drink the milk of a cow, you cannot do that from a book. इसलिए आप देखो ना, मेरी भाषा कोई साहित्यिक नहीं, जो बोलचाल की भाषा में बात करता है वैसे बात कर रहा हूँ। That's why my language is not sophisticated. I talk like a common man. इवन जो संदेश भी लिखता हूँ उसमें भी ग्रामेटिकल को मिस्टेक रहेगी। Even the messages that I write are grammatically incorrect often. गुरुमा की टीम बैठी हुई है, वो उसमें भी गलतियाँ निकालती है। Guruma has a team who edits all of my books for such mistakes. लेकिन मेरे को जो अंदर आता है वो बता। Because I simply say whatever comes to me. उसका पहला नाम मतलब उसको पूछो कोई मास्टर। If you have any questions about books, you should ask Guruma. She's the expert there. हृदय की बात पूछना है मेरे से। If you want to ask about the heart, talk to me. Yes, I want to ask about the heart. What you mean by heart? हाँ, मुझे हृदय के बारे में पूछना है। आप हृदय बोलते हो तो उसका मतलब क्या है? क्या? हृदय का मतलब क्या है? जब आप हृदय बोल रहे हो उसका क्या मतलब है? हृदय मतलब अपने भीतर से जो भी लग रहा है अंतर मन से पता है। उसमें कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं होता, बाहर का नॉलेज नहीं होता, बाहर का निर्जीव पढ़ा हुआ कुछ नहीं रहता है। By heart, I mean whatever comes from inside, without any external input from any books, from any other sources, simply what comes on the inside. दूसरा आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। आपके पास है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक साइकिल का पंप रहता है। Let me explain this with a simple example. In India, we have a pump to blow air into cycle tires. हवा भरते हैं साइकिल में, फिर पंप रहता है, उसमें हैंडल ऊपर करते हैं। So when you want to fill air, छेद रहता है, वो छेद से हवा पंप में जाती है, और जब ऊपर हैंडल नीचे करते हैं तो पंप की हवा साइकिल के ट्यूब में जाती है। when you pull the handle up, it pulls air inside, and then when you push the handle down, it pushes the air into the tire. बिल्कुल ठीक ऐसा ही एनर्जी मेरे भीतर नहीं है, मेरे माध्यम से एनर्जी बहती है, लेकिन मेरे में एनर्जी नहीं है। I am exactly the same. The energy flows through me, but the energy is not in me. तो जैसे पंप के छेद के ऊपर आप हाथ रख दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, पंप हवा को फेंक पाएगा ना, हवा फेंक पाएगा।
If you block the entrance of the air inside the pump, then the pump will neither be able to suck the air in nor push the air out. ठीक उसी प्रकार से आप मेरे छाती पर आके बैठ जाओ, फिर मेरे से कोई एनर्जी निकलना बंद हो जाएगी। In the same way, if you come sit on my chest, you will feel no energy at all. आप जितना स्पेस दोगे, जितनी जगह दोगे, उतना ज़्यादा एनर्जी का फ्लो रहेगा। The more space you give me, the more energy will flow. आपको आश्चर्य होगा, जितना बड़ा आपका हॉल है ना, जितना बड़ा मेरा स्टेज रहता है इंडिया में। You will be surprised, but the size of this hall, that's how large my stage is in India. लाखों लोग बैठे रहते हैं, लेकिन खूब दूर बैठे रहते हैं, मेरे आसपास कोई नहीं। And hundreds of thousands of souls sit, but not so close to me, they sit far away. और लाखों लोगों तक एनर्जी कैसे पहुंचता है? क्योंकि स्पेस मिलती है, जगह मिलती है। And how does the energy reach all of these hundreds of thousands of people? Because there is this much space around me. इसलिए मेरे भीतर कुछ नहीं है, सिर्फ मैं रिसीव करता हूँ और फ्लो करता हूँ। There is nothing inside of me. I simply receive and then throw out. तो उसी प्रकार से ऐसा कोई सवेरे प्लान करके नहीं आया कि आज ये बोलूँगा इस विषय में, कुछ भी नहीं, जो आपके सामने आया, आपकी जो इच्छा थी, जो लगा वो बोले। So I didn't plan what to say this morning. I just came here. Whatever your wish was, whatever came inside of me, I said that. इन्हें बोलने में ब्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। There is no contribution of the brain here. और जहाँ ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ हृदय का इस्तेमाल होता है। And where you're not using the brain, you're using your heart. मेरा कहना हृदय से ये है, जो सोचा समझा नहीं है, जो बुद्धि के आधार पे नहीं है, जो तर्क के आधार पे नहीं है। So when I say heart, I mean things that are not at the level of the intellect, not at the level of the brain, things that are not thought out. इसलिए उसको बुद्धि के आधार पर मत समझो, आप वाइब्रेशंस पे देखो, एनर्जी पे देखो, हृदय से अनुभव करो। That's why don't try to understand them at the level of the intellect. Try to experience the vibrations, try to understand the energy. दूसरा, जितना आपका रिसीविंग रहेगा उतना निकल जाएगा। In addition, your receiving capacity will determine how much I give out. तो जितना भी आज निकला है ना, वो आपके अच्छे रिसीविंग के कारण। Whatever has come out today is because of your good receiving capacity. अब मैं क्या बोला, मेरे को पूछोगे, मेरे को नहीं मालूम मैं क्या बोला। If you ask me what I said, I have no idea what I said. आपको तो मालूम है कि नहीं मालूम नहीं। I don't know if you know either. इसको हृदय की भाषा बोलते हैं। This is the language of the heart. इधर हृदय से हृदय तक पहुँचती है। It reaches from one heart to the others. और पुस्तक के ज्ञान बुद्धि से बुद्धि तक पहुँचता है, मस्तिष्क से मस्तिष्क। And book knowledge goes from one intellect to another intellect. तो मेरे को ना आपको इम्प्रेस नहीं करने का है, मेरे को आपको मेरे साथ लेकर के चलने। I don't want to impress you. I want you to walk with me. नेक्स्ट। So there's no more questions here. I feel melting and love with you, and I don't want to ask you any theoretical questions. मुझे और कोई प्रश्न नहीं है, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, मुझे प्यार महसूस हो रहा है, मुझे और कोई प्रश्न नहीं पूछने। बस यही बड़ा उत्तर है। This is the biggest answer. इसमें आप लोग बुद्धिवादी समाज से आए हो, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रश्न पूछो। मेरे गुरु को कभी कोई प्रश्न रहे वो बोलते ध्यान करो, कोई उत्तर ही नहीं देते हो। You are an intellectual audience, that's why I ask you to ask me questions. My guru has just told me to meditate. They never gave me any answers. और कोई प्रश्न? Very beautiful, thank you. I have a very deep connection to your mantra in German. When I say I'm a beautiful, I'm a holy soul, I'm a pure soul, I can feel that. But it's sounding all the time, and I used to do japa a lot with certain names, and so I have this habit of having something sound in me, because it seems to calm the thoughts. My question is, and when I meditate,
I will also, this mantra, it will just repeat, or I will say sentences that I have heard, such as Paramatman, or open the mind for the Guru energy. And this all sounds very holy, but there also seems to be a lot of noise because of it. And so my question is whether or not that is effort, because I don't really want to do it, it just comes. ये कह रही हैं कि उन्हें मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, वो जर्मन में बोलती है, उनको अच्छा लगता है उससे, लेकिन जब वो ध्यान करती है तो उनकी जो पुरानी आदत है, उन्होंने पहले बहुत जप किया था अलग अलग नामों का, अलग मंत्रों का, तो वो आदत जब वो ध्यान करती है तो ये उसमें भी जप आ जाता है, तो वो बार बार बोल रही होती है कुछ न कुछ मन में। तो क्या ये भी तो ये करना नहीं चाहती है, ये जानबूझ के नहीं करती है, बस ध्यान में भी ये जप चालू हो जाता है, क्या वो उनके लिए एफर्ट है, क्या वो करना चाहिए? दूसरा एक आध्यात्मिक आपकी प्रगति हो, इसलिए एक प्रश्न पूछूं? May I ask you a question for your spiritual progress? आपको किसी ने धोखा दिया है, ऐसा आपको लगता है क्या? Do you feel like someone has cheated you? Someone has cheated me? No. नहीं. फिर ऐसा भाव आपके ऊपर क्यों है? There is that feeling over you of someone having cheated you, that you feel like someone's cheated you. देखिए, मेरी भी इतनी बड़ी उम्र हो गई, हो सकता है मेरे को भी कुछ लोगों ने धोखा दिया होगा, लेकिन मैं भूल गया ना उसको। I have an advanced age. People must have cheated me as well, but I've forgiven everyone. I forgive it. जब हम भूलते नहीं, तो उसका इफेक्ट हमारे विशुद्धि चक्र पे होता है। When we don't forget, then it affects our throat chakra. तो वैसा इफेक्ट आपके चक्र पे दिख रहा है। That's the effect I see on you. और इसे आप बोलो नहीं, लेकिन फिर उसका इफेक्ट क्यों आ रहा है? If you're saying it's not true, then why do I see that effect on your throat chakra? Do you mean I feel maybe I cheat myself because I don't because okay. So if I say this mantra, then and I feel there should be silence, maybe I feel I'm cheating myself, or do you mean it's a family member or somebody like that? ये कह रही है कि आपका मतलब क्या ये है कि मैं अपने आप को धोखा देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शांत बैठूं, लेकिन फिर भी जब आता है, या क्या कोई बाहर का परिवार का सदस्य? नहीं, इसका रूट कॉज आता नहीं। रूट मैंने इनको इनके जीवन में किसी ने धोखा दिया होगा, प्रत्येक आदमी को कोई ना कोई देता है, लेकिन वो अगर धोखा भूल गए तो उसका इफेक्ट अपने ऊपर नहीं रहता है, ये वो उसको याद रख के बैठे और उसके आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। He's saying that your problem is this feeling of being cheated. He said that at some point in your life someone must have cheated you and you haven't forgotten that, and this is causing a problem in your spiritual growth. That is your actual problem. Thank you. There, I will look at that, and it sounds true. बोल रही है इसके बारे में सोचेगी, शायद ये सही बोल रहे हैं आप। नहीं, उसको सोचने का जरूरत नहीं है, जिसको भी हो उसको क्षमा करो, माफ करो। There is no need to think about this. Whoever it is, just forgive it. Just forgive it. अभी ये जगह पकड़ा है, नहीं बाद में फिर ये पकड़ेगा। Right now it's your throat chakra. If you keep thinking about it, then your forehead chakra will also get affected. तुमने फील किया कि इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को धोखा दिया, याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में उसका सब करना हो जाएगा। ऐसा करके फिर आगे जगह पकड़ेगा। So right now you don't remember who has cheated you, but if you keep thinking about it, who cheated me, oh may something bad happened to him, then your forehead chakra is blocked. तो इसलिए ना उसको याद करने का जरूरत नहीं, जो कुछ है सबको क्षमा कर दो, माफ कर दो।
So no need to even remember it, no need to think about it, just forgive everyone. एक्चुअली हर दफे याद रखना, तुम सब लोग ही याद रखो कि कोई भी चीज अपने जीवन में घटना घट जाती है ना, उसका इफेक्ट तब ज्यादा होता है जब हम उसको बार बार याद करते हैं। This is for all of you. Any event that happens in your life, it affects you if you keep thinking about it. लेकिन भूल गए तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। But if you forget it, then it does not affect you. जैसे बोलते हैं ना, रात गए बात गई, ऐसा इसका स्वभाव है, उसको कोई इफेक्ट नहीं रहता। There is a saying in Hindi, once the night is gone, the issue is gone. अब गुरु माँ पर मेरा ऐसे ही है, हम झगड़ते हैं, बाद में दूसरे दिन भूल जाते हैं, कल आ जाते हैं। It's the same with Guru उसका and इफेक्ट हमारे पे नहीं होता। we fight one day, the next day we've forgotten about it, so it doesn't affect us. ऐसा रखोगे फिर किसी को नहीं, तो फिर ना उतने दिन तक याद रखोगे, उतने दिन उसका इफेक्ट वो उस चक्र को डैमेज कर देगा। The number of days that you remember and think about this event, that many days you will keep feeling the effect of the negative things. अब So मैं just एक forget. घटना बताता हूँ, घटना बताता हूँ। I'll tell you an incident. एक मठ के अंदर एक बार मैं वहाँ डॉक्टरों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और उनका बहुत बड़ा मठ था, उस मठ के अंदर ध्यान का शिविर लेके आए। Once I was conducting a workshop for doctors at a religious organization. तो ये मठाधीश थे, एक दिन उनके हार्ट में कुछ जोर से पेन होने लगी। The leader of this organization one day had pain in his chest. तो उस संस्था का हॉस्पिटल था, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में वगैरह में दिखाया। The organization had its own hospital, so the leader went to that hospital. बाद में उनका शिष्य मेरे को बुलाने के लिए आया, स्वामी देखो ना हमारे मठाधीश के छाती में दर्द हो रहा है। One of his disciples came to call me and said, "Look, Swamiji, our leader is suffering from chest तो pain." स्वामी जी को मैंने पूछा, आप क्या हॉस्पिटल के दौरे पे गए थे क्या? बोला एक राउंड मारने आते थे हॉस्पिटल में, और तुम्हारे सामने किसी की डेथ हुई क्या? तो बोले नहीं, आज मैं गए नहीं। I asked him, "Do you take a round of your hospital? Did someone die in front of you on one of these rounds, perhaps?" And he said, "No, I didn't go today at all." मैंने बोला तुमको किसी आदिवासी ने धमकी दी क्या? मार डालूंगा, काट डालूंगा ऐसे? I told him, "Did any original inhabitants, native inhabitants threaten you and say, I will kill you?" तो बोले नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। No, nothing like that happened. उन्होंने डॉक्टर से सब मेडिकल चेकअप कराया, सब कुछ, उनके हार्ट का मालूम नहीं पड़ रहा था क्यों क्यों मरा। The doctors examined him, conducted all kinds of tests on him. No one could determine why he had that chest pain. और मेरे को भी कोई क्यों नहीं मिल रहा था कि इनके हार्ट में क्यों पेन है। And I couldn't understand why he has that pain either. फिर उनको मैंने बोला एक काम करो, छोड़ो, आराम से चाय वाय पीते ऐसे करके हम बातें करने बैठे। So I told him, forget about that, let's sit down and have some tea, let's talk. फिर मैंने उनको पूछा आप यहाँ कब से आए? I asked him, when did you come here? तो बोले 5 साल हुए। He said, it's been 5 years. मैंने पूछा इसके पहले कहाँ थे? I asked him, where were you before this? इसके पहले हैदराबाद में। He said, I was in Hyderabad. और हैदराबाद का जो मठाधीश था ना स्वरूपानंद, मेरी बिल्कुल उसके साथ जमती नहीं। And he said, the leader of the organization in Hyderabad, Swarupanand, I don't get along with him at all. उसने मेरे को खूब तकलीफ दिया। He bothered me a lot, he troubled me a lot. बाद में फिर मैं यहाँ आया हूँ। Then I came here. तो जैसे उसने स्वरूपानंद का नाम लिया ना, वैसे मैंने स्वरूपानंद को चित्त से देखा, तो उनको हार्ट अटैक हुआ था। As soon as he mentioned Swarupanand, my chitta went to him and I examined Swarupanand ji and I realized that he had had a heart attack. फिर मैंने उनको बोला कि तुम पता लगाओ ना स्वरूपानंद कहाँ है। So I told him, why don't you find out what happened to Swarupanand? तो उन्होंने वो हैदराबाद फोन किया, मालूम पड़ा स्वरूपानंद जी नागपुर में किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, उनको हार्ट अटैक आए थे, हॉस्पिटल में एडमिट है। So he called Hyderabad and found out that Swarupanand ji was in Nagpur for a conference and he had a heart attack and was admitted to the hospital. मैंने थोड़ा समझो इस बात को, उनका दुश्मन स्वरूपानंद था। So try to understand, his enemy was Swarupanand. स्वरूपानंद को हार्ट अटैक आया तो इनको हार्ट में पेन हुआ। Swarupanand got a heart attack and he felt pain in his chest. यानी आपके दुश्मन को हार्ट अटैक आएगा तो उसका पेन आपको होगा। So if your enemy goes through a heart attack, you will feel the pain. दुश्मन को कैंसर होगा, उसका इफेक्ट आप पे आएगा। If your enemy gets cancer, you will get the effect of that. तो इसलिए किसी से भी दुश्मनी मत रखो। So don't have enmity with anyone. दुश्मनी समझ करके आप उससे संबंध स्थापित करोगे ना, तो उससे उसकी बीमारियां होती रहोगी। If you establish enmity relations with anyone, then you will absorb all of their illnesses. वो मठाधीश को मैंने बोला यहाँ हाथ रख के बोलो कि स्वरूपानंद को मैंने पूर्ण मन से क्षमा कर दिया है, ऐसा आधा घंटा जाप करो। I told him to place his hands on his forehead and chant the mantra that I have forgiven Swarupanand. ऐसा आधा घंटा किया तो वो जो इफेक्ट था स्वरूपानंद को चला गया।
When he did this for half an hour, the effect of Swarupanand disappeared. ये घटना से याद रखो, तुम दुश्मनी के कारण किसी को भी याद रखते हो तो तुम्हारा चित्त दुश्मनी के कारण तो ना उसके साथ जुड़ जाता है. So remember that even if you think of someone as an enemy, your mind is on that other person. और जुड़ जाने के बाद में उसके अंदर से ग्रहण करता है. And therefore you absorb from that person. कई लोग कहते हैं कि भगवान को याद नहीं करें लेकिन दुश्मन को रोज अगरबत्ती दिखाते, रोज याद करते. There are several people who won't think of God, but they will think of their enemies every single day. आप इनडायरेक्टली उससे ग्रहण करते हैं, वही तुम्हारा भगवान है. And indirectly you are absorbing from this person, so this person becomes your God. तो इसलिए किसी से भी दुश्मनी के रूप में किसी से भी माफ करो, सबको क्षमा करो, सबको माफ करो. So don't keep any kind of enmity with anyone, forgive everyone. दूसरा मेरे को जाकर उनसे पैर पड़ने को नहीं बोल रहा. I'm not asking you to go and bow down before them. मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, एक बिच्छू ने आपको काटा है, उसका जहर आपके बॉडी में, उसको निकाल के फेंको. If a scorpion has bit you, that poison is in your body. Get rid of that poison. क्षमा करना है वो जहर को फेंकना है. Forgiveness is like throwing away that poison from your body. आप भी क्षमा करो. Forgive them. Can I thank you so much. Can I? कुछ पूछे ना? विनीता ने बोला एक ही सवाल. Swamiji, अब तुम कहोगे मत जाए. he doesn't want you to go away dissatisfied. Oh, I'm not when I go inward, when you say go inward, then the attention, I think the attention is the chitta goes here, and then the thought comes, you should go here. So there is constantly this kind of conflict between where the chitta should be. ये कह रही है कि जब आप बोलते हो अंदर की ओर जाओ तो उनका चित्त इस हिस्से में आ जाता है, लेकिन फिर याद आता है अंदर inside is here. यहाँ आ जाता है, इसलिए तो विशुद्धि पकड़ रहा है. यहाँ आने दो, फिर वो खुल जाएगा. Maybe it's because it's here that your throat chakra is not open, so start here. Put yourself there hard if you find it difficult to focus your attention there. महत्वपूर्ण है, attention यहाँ आना है. Your attention needs to be there. अच्छा, एक बात और बताता हूँ, तुम लोगों के मन में किसी का विचार आया हुआ इसलिए मेरे को बताने की प्रेरणा मिली. तुम लोगों के मन में कोई विचार आया हुआ इसलिए मेरे को बताने की प्रेरणा मिल रही है. आगे बता रहा हूँ. I'm going to tell you something. You must have thought of some specific thing, and that's why I feel the need to tell you this story. देखिए, अंतर्मुखी यानी क्या? ये प्रश्न शायद आपके किसी के मन में आया होगा. What is this inward journey? Look inward. One of you has thought that. और मैं अंतर्मुखी हुआ कि मेरे को कैसे पता चलेगा? And whether I have gone inwards, how do I know? आप जिस दिन अंतर्मुखी होंगे ना, सबसे पहले आपको आपके दोष नजर आएंगे. As soon as you go inwards, the first thing that will happen is that you will see your own faults. ये दोष दिखना अध्यात्म की सबसे बड़ी पहचान है कि आपके आध्यात्मिक प्रगति हो रही है. This ability to see your own faults is the biggest sign that you are progressing spiritually. जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ कि नहीं अभी, तो मेरे को आप दिख रहे हैं. मेरे पीठ के पीछे क्या है, मेरे को क्या मालूम? I'm sitting in front of you right now, so I can see you. I don't know what is going on behind my back. ठीक इसी प्रकार से जब अंतर्मुखी होते हैं ना, तो हमको दूसरे के दोष दिखते नहीं, हमको हमारे दोष दिखते हैं. In the same way, when you look inwards, you see your own faults, not the faults of others outside. तो जिस दिन आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना आपकी आध्यात्मिक प्रगति शुरू है. So the day that you start seeing your own faults, you know that your spiritual progress has started. आप अंतर्मुखी हो गए. That you have become inward looking. ये पहचान है अंतर्मुखी की. आपको आपके दोष दिखना चालू है. This is a sign that you start seeing your own faults. Hello, Swamiji. I have meditated only for 42 days since the Easter retreat in the UK.
I feel I come home. And my question is, I feel like I too am a medium, and I work as you work from my heart with people, helping them remove blocks in their life. My question is that thought my ego that makes me think that I need to grow my work? Currently I work with just about 3 people each year, and I'm frightened of growing bigger or doing more, but surrendered to it too. ये कह रही हैं कि उन्हें ध्यान शुरू करके सिर्फ 42 डेज हुए हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वो अपने घर आई हो। इनको लगता है कि ये भी एक माध्यम है, जैसे आप करते हैं वो भी लोगों के साथ काम करती हैं, उनके चक्र खोलती हैं। तो क्या ये उनका ईगो बोल रहा है, या क्या ये उन्हें अपना काम बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा लोगों के साथ ये काम करना चाहिए? नहीं, दूसरों के चक्र खोलने के पहले अपने चक्र खोलना चाहिए। Before you open other people's chakras, you should open all of your chakras. हमारा नाभि क्यों पकड़ा हुआ है? Why is your navel chakra blocked? वो पेट के प्रॉब्लम है। Do you have stomach problems? हाँ, है कुछ। हाँ, तो पहले वो दूर करो। First get rid of those. क्योंकि होता क्या, एक जगह बीमारी लगती है, फिर वो फैलते पूरे बॉडी में। What happens is that the diseases could start in one region and then it could spread to all the other areas. और दूसरा, कुछ दिन तक किया तो नाभि पे हाथ रख के ध्यान करो, तो नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाए। For a few days, place your hands on the navel chakra and meditate, and that will help the chakra to open. और सब लोग याद रखो, प्रचार करने का जरूरत नहीं, प्रचार होना चाहिए। And everyone remember that you shouldn't need to work to spread the message, it should just happen. देखिए, जैसे आपका नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आप आपके पास में रख नहीं सकते, आपको बाहर फेंकना ही पड़ेगा। When your navel chakra is activated, you won't be able to keep the information to yourself. You'll have आपको to जो get it अनुभूति out. हुई है, आपको जो ज्ञान हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आप में से बहना चालू हो जाएगा। Whatever experiences you've had, they will automatically start flowing through you. लेकिन ये ऑटोमेटिकली बहना चाहिए, आप खुद होकर करने मत जाओ, करने जाओगे तो फिर मैं जीवित रहेगा। But this should be an automatic process. Don't attempt to do this because then the I comes into the picture. से प्रचार मत करो, प्रचार आपके माध्यम से होना चाहिए। So don't spread the message through your body. The message should be spread through you. वैसे ही है, आप प्रचार भी मत करो, आप पहले अपना ध्यान करो, ध्यान करके एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपके माध्यम से प्रचार होने लगे तब करो। Don't try to spread the message now. You meditate and develop yourself, and when you get to that stage, it will automatically happen through you. अरे बाबा, करता है ना समाप्त होता है, वहाँ आध्यात्मिक स्थिति चालू होती है। Where the feeling of doer, of the actor ends, that's where spiritual progress will start. तो प्रचार भी होने दो, करो। So even with spreading of the message, let it happen. Don't do it. Thank you. एक्चुअली आप जैसे मेरे सामने आता, ऑटोमेटिकली झेरॉक्स हो गया, आपकी पूरी सब मेरे पास है। As soon as you come before me, it's like I have a Xerox copy of all of your information. इस जीवन की, पिछले जीवन की, पास्ट लाइफ की सब आ जाता है। Of this life, of your past lives, all of the information. एक्चुअली अभी ना मैं एक पुराण शास्त्र करके किताब लिख रहा हूँ। I'm writing a book currently called The Science of the Order. तो मैं शांति के साथ अगर बैठता हूँ ना और एक व्यक्ति की तरफ देखता हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे मुझे एक व्यक्ति नजर आता है। So when I focus on a person, I see another person behind them. तो उसकी मैंने 3 संभावनाएं देखी। So I have 3 possibilities for this. देखो, पहली संभावना ये है कि उस व्यक्ति के ऊपर चित्त होगा जो पीछे दिख रहा है। So first possibility is that the individual has his attention focused on another person, and that's the person I see behind them. दूसरी संभावना है वो उस आत्मा का इस शरीर के ऊपर इफेक्ट है। The second possibility is that there is another soul whose effect is on this person. और तीसरी बात है कि उसका पूर्व जन्म का शरीर है। And the third possibility is that this body is their body from a previous life. फिर एक व्यक्ति का जब मैंने बार-बार अध्ययन किया तो पता चला कि उस व्यक्ति के पीछे का व्यक्ति एक ही रहता है।
When I study the same individual several times, I have noticed that this person behind him is always the same. तो एक व्यक्ति का सदैव एक ही व्यक्ति में चित्त तो रहेगा नहीं, यानी फिर ये बात गलत थी कि चित्त के उसका चित्त उसके ऊपर। It's not possible that the person will always have his mind focused on the same other person. So then this explanation is not the correct one. और दूसरी ये संभावना थी कि उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, तो प्रत्येक व्यक्ति में भी आत्मा का साया होता है, सबके पीछे दिखता है। The other possibility that this is another soul whose effect is on the person, that cannot be either, because it's not possible that there is a soul affecting every other person. फिर केवल लास्ट रह गया, लास्ट ये कि पूर्व जन्म का डेविल उसके पीछे दिखता है। So then it only leaves the third option, that this is the body of a previous life I see behind. प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति दिखता है। So I see one person behind every person. तो उसी का अध्ययन कर रहा हूँ, उसी का एक पुस्तक लिख रहा हूँ, पूरा शास्त्र। That's what I'm studying and that's what I'm writing about. It's called Science of Life. अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि वो आपकी चक्र की स्थिति क्या है, आपका ओरा क्या है, आपका अवमंडल क्या है, सब बता देगा। Technology has advanced so much that today it can study your aura and tell you everything about the chakras. कभी ये नहीं बता पाएगी कि चक्र का स्थिति बिगड़ा कौन से चक्र से। But they will not be able to tell you how or why a specific chakra is not working as expected. एक्चुअली हमारा एक चक्र पकड़ता है और बाद में धीरे-धीरे वो चक्र की बीमारी फैलना चालू है। Usually it starts with one chakra being blocked and then it spreads to all of the other chakras. तो ये चक्र कहाँ से शुरू हुआ, ये बात मशीन नहीं बता पाएगी। But no machine can tell you where the root of the first spoiled chakra is. इसलिए उसके ऊपर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। That's why I'm writing a book on the topic. बहुत बड़ा ग्रंथ है, सालों लगेंगे उसमें। It's a very big book. It will take several more years to complete it. Next. तो पहले ध्यान करके अपना स्थिति करो और आपके माध्यम से प्रचार होना चाहिए, प्रचार करने का कोशिश मत करो। So meditate and improve your state, and then the message will pass through you. Don't try to do it. Just now when I heard about the navel chakra, I was remembering that my ayahuasca shaman woman, 2 or 3 years ago, she removed all my chakras and she just cut them off, and when she cut off my crown chakra, I had a headache, but it was free, and it was like a stabbing pain in my head, but it was free. And she said that they were implants from Egyptian aliens and stuff. And now after that, when I was in, it was supposed to free us to be light workers, and the chakras were like sucking devices for the Anunnaki to soothe our energies. And after that, my throat chakra got supposedly removed, and I got more self-confidence and these things. And when I went into many people, like into a crowd, I could like suck the energy, but only the positive and high frequencies. And I believe that, like my Persian healers, they said they grow back. We do that too, but they are like flowers. When one is old flower, it hangs in your face. They cut them off and they grow back like a fresh flower. And I feel like, I don't know. I just wanted to ask if you know about removing the chakras or renewing them, or if my energy system is damaged, and the ayahuasca shaman light worker woman who was working with angels was supposed to be maybe the evil one who were connecting her chakras to her system or stealing something from her. ये कह रहे हैं कि उन्होंने शमन से बात की है और उनके हीलर्स वगैरह से बात की है, और एक बार एक हीलर ने उनके चक्र शरीर से निकाल दिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि चक्र बुरी चीज़ होती है जिससे कि बाहर के जो पृथ्वी के नहीं है वैसे लोग हमारे ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये भी बताया गया था कि चक्र फिर से उग जाएंगे, जैसे कि अगर एक फूल को काटो तो फिर से नया फूल उगेगा। तो वो वही बोलना चाह रहे हैं कि क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या चक्र निकाल सकते हैं, क्या वो फिर से उग सकते हैं? ये जो बता रहे हैं इसका मेरे को कोई ज्ञान नहीं। I don't know anything about what you are narrating. लेकिन एकदम आसान रास्ता।
आसान मार्ग आपको बताता हूँ। but I'll tell you an easy way. यदि मैं कोई चक्रों के चक्कर में पढ़ूँ, Do not get involved with all of these chakra topics. मैं कभी नहीं पढ़ा। I never got involved with these. मैंने मेरे गुरु को समर्पित कर दिया, मेरे चक्र भी तेरे हैं, मेरी नाड़ियाँ भी तेरी हैं, तू जाने तेरा काम है। I surrendered all of this to my guru. All of my chakras are yours. All of my channels are yours. You handle them. जब हम बोलते हैं ना मेरे चक्र, तो मैं तो जीवित है। If you say my chakras, then there is a my, there's an I in there. ठीक उसी प्रकार से आप मत कहो कि आपके कौन से चक्र है, आप बोलो ना स्वामी जी मेरे चक्र भी तुम्हारे हैं, मेरी नाड़ियाँ भी तुम्हारी, सब समर्पित कर दो, छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका मैं ही विसर्जित हो जाएगा। So you do the same thing. Just say all of my chakras are yours, all of my channels are yours, and then if there is no my, then you've given up all of that. और दूसरी बात है हीलिंग की, हीलिंग होना चाहिए, हीलिंग करना नहीं चाहिए, ध्यान करोगे और कर्ता का भाव रहेगा। Another thing again with respect to healing, healing should happen. One shouldn't do healing. अब जैसे कल मैंने वो नैमिषा बहन की बात की थी, वो नैमिषा बहन मुंबई की प्राणी हीलिंग की बहुत बड़ी हीलर थी। Yesterday I talked about Nimisha Ben. She was a well-respected, known healer in Mumbai. दूसरा मुंबई, गोवा, बड़ौदा, अहमदाबाद, नवसारी सब जगह उसके ब्रांचेस थे। She had branches in Mumbai, Baroda, Ahmedabad, and several other cities. लेकिन जब उसको अनुभूति हुई, उसने अपने सब शिष्यों को कहा कि मैं को मेरे से भी हायर एनर्जी मिली है, मैं उससे जुड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम सब मेरे साथ आओ। But when she found me, she told all of her disciples that I have found an energy that is larger than me. I'm going to go merge with that energy. You should come too. अब ये नवसारी की जो राम भैया है, ये उसके परम शिष्य थे। Ram Bhai in Navsari, that some of you might know, it was also a disciple of Nimisha Ben. तो कहने मतलब वो इसके साथ इसके अंदर मर्ज हो। So they all merged into the Samarpan meditation. तो मेरे को तो एक ही दिन में इतने सारे सेंटर्स मिल गए। So within one day, I had so many different centers. तो शॉर्ट में कहने का यही है कि हीलिंग के चक्कर में मत पड़ो, हीलिंग होना चाहिए, हीलिंग की थोड़ी जाती है, हीलिंग यहाँ करोगे और तुम्हारे अंदर कर्ता का भाव आएगा, उसका नेगेटिविटी तुम अपने पास करो। So don't get involved with healing. Healing shouldn't be done. Healing should happen. और ये हीलर लोगों की आदत एकदम थोड़ी छूटती है। And this habit of healers will not go away instantly. अब एक बार मैं निमिषा बहन के घर गया था तो दिवाली हुई थी, उसने घर को खूब अच्छा रंग रोगन करके खूब सजा करके रखा। Once I went to Nimisha Ben's house during Diwali and the house was well decorated. और जैसे ही उसने घर में गया घुसा, मैंने उसको गालियाँ देना चालू की, कितना घर गंदा करके रखा है, सब बेकार है, फैला के रखा है। As soon as I went inside, I started abusing her and saying, "You kept the house so dirty. What is all of this mess?" तो उसको खूब आश्चर्य हुआ, इतना मैंने सजा करके रखा तो बोलो गंदा करके रखा। She was very surprised. I've decorated it so well and you think it's dirty? कि उसने उसके घर में कितने लोगों की हीलिंग की थी, कौन कौन से बीमारियों की हीलिंग की थी, वो सब निगेटिविटी उसके घर में चले गई। All the people that she had healed, all the people that she had, all her clients, all of that energy was in the house. That's why it was so dirty. उसने कहा मैंने उनकी बीमारी लेकर नमक के पानी में डाली ना, इनके तूने डाली होगी, गई नहीं ना वो। She said, I took their diseases and I put them into salt water. Swamiji said, you put them, but they didn't go. उसके बाद में उसने एक बहुत बड़ा क्रिस्टल दिखाया, उसके अंदर छोटे छोटे खूब सारे क्रिस्टल दिखाए और वो पानी में डाल के बैठी थी रात भर। मैंने बोला इससे क्या होगा, बोले कुछ नहीं, सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे रात भर। So she showed me a large crystal and several small crystals. She immersed them in water. I said, what will happen? She said, nothing. They will get cleared overnight. दूसरे दिन सुबह मैंने पूछा सब क्रिस्टल क्लियर हो गए, बोले हाँ। So the next morning I asked her, have the crystals all been cleared now? She said, yes. मैंने बोला नहीं हुए, सब छोटे क्रिस्टल का एनर्जी गंदा एनर्जी वो बड़े क्रिस्टल में आ गया। I said, no, they haven't. All the bad energy of the small crystals is now all collected in the big crystal. तो क्या होता है मानो, जब तक इस विषय का ना पूरा ज्ञान ना हो, इसके अंदर मत पड़ो। So unless you have complete full knowledge of this topic, do not get involved with these things. मुंबई में बड़े बड़े हीलर लोगों को बाद में कैंसर हुआ है। Very well-respected, known healers in Mumbai have developed cancer. क्या होता है मानो, ट्रीटमेंट करते समय ये कभी भी अपना माइंड भूल नहीं पाते। The thing is that when they are healing, when they are treating others, they are not able to give up the I within them. इसलिए पहली बात तो मैंने बताया ना, हीलिंग होना चाहिए, हीलिंग करो मत। That's why I said healing should happen, don't do healing. इसलिए जब भी मैं यूके में वगैरह शिविर लेता हूँ, सब यूके के हीलर हीलिंग के आते हैं वहाँ पर। Whenever I take workshops in the UK, all the healers of the UK come for these workshops. इसलिए हीलिंग के चक्कर में मत पड़ो, अपने खुद की। मैं चाहता हूँ आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे पे भी डिपेंड मत रहो।
So don't get involved with healing. I want you not to be dependent on anyone, not even dependent on me. आप नियमित ध्यान करो, नियमित मेडिटेशन करो और अपने गुरु खुद बनो. Meditate regularly and become your own guru. आपको किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं हो, आप स्वावलंबी बनो. You won't need anyone else, then you will become completely independent. और अंतर्मुखी होकर आप कर सकते हो. And if you go inwards, you can do this. ये मेरी शुद्ध है. This is my pure way. आप किसी पर डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो. Don't be dependent on anyone. Become आपके जीवन independent. में मैं आपको सशक्त करने आया हूँ, मेरे पे डिपेंड करने नहीं. I have come into your life to make you strong, not to make you dependent on me. इसलिए स्वावलंबी बनो. Become independent. Can I ask if you can open my crown chakra? क्या आप मेरा सहस्त्रार खोल सकते हैं? हमारी नाभि पकड़ी हुई है, क्राउन नाम पूछे हुए हैं. Your navel chakra is blocked. You haven't reached the crown chakra. और दूसरा वो चक्कर के चक्कर में मत पड़ो ना, आप ध्यान करो सब खुल जाएगा. क्राउन भी खुल जाएगा, सहस्त्रार भी खुल जाएगा, सब खुल जाएगा. Don't worry so much about the chakras. Just meditate. Everything will open. Your navel chakra, your crown chakra. अभी मैं चित्त से कोई चक्कर खोल भी दूँ तो आप मेरे पे डिपेंड हो गए. If I open one of your chakras right now with my mind, then you will become dependent on me. मैं चाहता हूँ आप आपके ध्यान से, आपकी साधना से करो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे चक्र खोल दिए. I want you to open your chakras through your own effort, through आप meditation, मेरे so ऊपर that निर्भर मत रहो. you are confident that you did it. सब लोग याद रखो, कोई चक्कर के चक्कर में मत पड़ना. अब आपका सारा चित्त, आपका ध्यान सहस्त्रार चक्र पे रखो. Don't worry about any of the chakras. Put your entire attention on the crown chakra. सहस्त्रार चक्र पे पहुंचने के बाद में बीच के सारे चक्र क्लियर हो जाएंगे. Once you get to the crown chakra, all of your other chakras will ये open up. निमिषा बहन का फ्लैट है मुंबई में, उसके नीचे एक और फ्लैट है. वो फ्लैट किसी साधक ने मेरे को दे के रखा था. There is a flat below an apartment below the apartment of Nimisha Ben in Mumbai. Some meditator had given me this flat to use. और निमिषा बहन की लड़की बाहर दरवाजे में बैठी थी. And the daughter of Nimisha Ben used to stand outside the apartment. तो विपश्यना के गुरु जिन्होंने 40 साल तक विपश्यना सिखाई, वो मुझे मिलने को आए. And a guru who had taught Vipassana meditation for 40 years came to me. और उन्होंने कहा मैं विपश्यना का गुरु हूँ, मैं आपसे पब्लिक में आके ध्यान नहीं सीख सकता, मुझे अकेले में सिखाओ. He said, I am a guru of Vipassana. I cannot come to you in public to learn meditation. Please teach me in private. तो मेरे गुरुओं ने कहा हुआ है जो आदमी एक रास्ते के ऊपर चल रहा है उसको खींच के उसकी मुंडी पकड़ के इस रास्ते पे चलाने का कुछ जरूरत नहीं. My gurus have told me if someone is walking down a specific path, there is no need to grab him by the neck and drag him to this तो path. मैंने उनको 1.5 घंटे तक समझाया कि आप 40 साल से विपश्यना करो तो विपश्यना ही करो ना, इस मार्ग में काय बात है. I explained to him for 1.5 hours that if you've been doing Vipassana, please continue to do that. There is no need to switch. तो उन्होंने मुझे समझाया विपश्यना आज्ञा चक्र तक का है, आपका ज्ञान सहस्त्रार चक्र का है, एक चक्र ऊपर का है, एक चक्र और प्रगति करने के लिए आपके पास आया. And he explained to me that Vipassana takes you up to the forehead chakra. Your meditation goes all the way to the Sahasrara. So I've come to you to rise to that one last chakra. कुछ नहीं, फिर उनको आत्म साक्षात्कार कराया, उनको अनुभूति कराई. अनुभूति कराने के बाद में सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे तो उनको एक दिव्य अनुभूति हुई. So I gave him self-realization. I gave him energy and he could reach the Sahasrara chakra and he felt very, very good. तो मेरे को ना किसी बात का कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग आके मेरे को ज्ञान देके जाते हैं. I don't have any knowledge. People come to me and give me knowledge. तो विपश्यना का भी मेरे को कोई ज्ञान नहीं है. वही आकर के बता गया है विपश्यना आज्ञा चक्र तक है, आपका सहस्त्रार चक्र. I know nothing about Vipassana, but he told me that Vipassana only takes you to the forehead chakra. इसलिए फिर आपको रिपीट करता हूँ, आप चित्त यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे ऑटोमेटिकली एनर्जी यहाँ से पास ऑन होते हुए सब चक्रों से वो यहाँ पहुँचेगी, तो रास्ते के सब चक्र क्लियर हो जाएंगे. So I'm again going to repeat, you need to focus your attention on the crown chakra. If you do that, the energy rises through all of the chakras and they will all be opened. चित्त सहस्त्रार पर रख के ध्यान दो, सब चक्र खुल जाएंगे. Focus your attention on the Sahasrara and meditate, everything else will open up. Thank you. Swamiji, 3 years ago I didn't know anything about chakras and I still don't, but I had a tingling feeling at the top of my head.
played with it. And I didn't like the experience, so I panicked. Since then, this tingling sensation is gone, and when I try the Samarkand meditation, I feel restless. So it's difficult for me. What can I do? वो कह रहे हैं उन्हें 3 साल पहले चक्रों का कोई ज्ञान नहीं था, अभी भी नहीं है। जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्हें सहस्त्रार पे हल्का सा स्पंदन हुआ, तो वो उसका अध्ययन करने लगे, लेकिन फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा, वो घबरा गए और फिर वो स्पंदन चला गया और फिर से नहीं आ रहा है। और अब वो ध्यान करते हैं तो उन्हें बेचैनी होती है। क्या करना चाहिए? आत्मग्लानि करना छोड़ देना चाहिए। Stop feeling guilt. आपको आत्मग्लानि क्यों? Do you have guilt about something? जब 4 लोगों के बीच में बैठते हो तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके अंदर कुछ कम है? When you sit among 4 other people, why do you feel like there is something less in you? एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली हमको यश की प्राप्ति नहीं होने देती, सक्सेस नहीं होने देती। The blockage of this area of the throat chakra does not allow us to succeed in life. हम 100% मेहनत करें, हमको रिजल्ट 40% मिलता है। We work hard, we work 100%, but we only get results worth 40%. दूसरा फिर रिपीट करता हूँ, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कोई चक्र पकड़ा ना होगा। कोई ना कोई चक्र तो खराब रहते। उधर ध्यान मत दो, आप ध्यान यहाँ रखो, यहाँ ध्यान रखोगे ना, कोई भी चक्र वो फंसेगा, सब चक्र खुल जाएंगे, सब चीजें अच्छी होगी। इसलिए ज़्यादा चक्रों के चक्कर में मत पड़ो। Let me repeat, there is no one who has all of their chakras open. Everyone has some blockages here or there, but don't focus on any of these chakras. Focus your attention on the crown chakra and meditate, and everything will open up. और दूसरा ध्यान में कभी कभी ना मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा ऐसा जो विचार आता है, वो एक्चुअली आप नहीं मरने वाले रहते, आपका ईगो, आपका मैं मरने वाला रहता है, तो वो आपको डराता है। Sometimes during meditation you might get the fear that you will die. This is not you, this is your physical body, your ego that is afraid to die. आपका अहंकार आपको छोड़ना नहीं चाहता। Your arrogance doesn't want to leave. समझा? Understood? Yes, thank you very much. What is the difference between heart level and soul level? हृदय के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान करो तो पता लगेगा। Meditate and you will find out. मैं बताऊंगा, मेरे अनुभव के आधार पर बताऊंगा, और तुमको पटेगा। What I tell you, I will tell you on the basis of my experience. You won't understand that. तो उससे अच्छा तुम खुद अनुभव लेकर कैसे? So it's better if you experience this for yourself. Next. कभी कभी ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन पहले अपनी स्थिति तो बनाओ। स्थिति बनाओगे ना, सब बातें तुम्हारे खुद समझ में आएगी। अब एक प्राइमरी का लड़का कॉलेज की बातें पूछेगा तो कैसे जाएगा? Sometimes you ask such lofty questions. First, improve your own state. If you're a primary school student and you ask me a university level question, how can I answer that? कॉलेज में पूछो, कॉलेज की बातें समझो। Once you get to the college level, you'll understand the college level topics. पुस्तकें पढ़ना बंद करो, पुस्तकों से दिमाग खराब हो जाएगा। Stop reading books, it's ruining your minds. ये तुम्हारे सब प्रश्न पुस्तकों में से पैदा हुए हैं। No, I'm telling the truth. All of these questions are arising out of your books.
होता है ना, अब कई बार कई गुरु लोगों का सम्मेलन होता है, मैं उनको बोलता हूँ पुस्तक की बात नहीं करूँगा, पुस्तक की बात आप मत करना, तो हम मौन हो जाते हैं कि उनके पास पुस्तक कैसे कोई ज्ञान नहीं होता। Sometimes I conduct workshops with other gurus and I tell them, I will not talk about books, you don't talk about books. And then everyone's quiet because they have nothing else to talk about. Because all their life they've read books. I have always been suffering. जब आपको ना अंदर से ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा, आपकी पुस्तक पढ़ने की इच्छा ही नहीं। When you start receiving knowledge from inside, you won't need to, you won't feel like you want to read books. अंदर से मजा आना चालू हो जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। You will start enjoying from within and you won't need to read anymore. अब देखो ना, एक पुस्तक है मेरे सामने जो आके बैठता है, वो एक पुस्तक है, उसको जैसे ही देखता हूँ पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ। Each one of you in front of me is a book. As soon as I look at you, I'm reading your book. तो मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन आपको पुस्तकें पढ़ी गई। So I haven't read any books, but I've read hundreds of thousands of books. प्रत्येक व्यक्ति एक पुस्तक है। Every individual is a book. तो उसकी हिस्ट्री जागृति सब उसके साथ में लिखी है। Their history, their nature, their stories, I know everything. कुछ आपके पुस्तक में क्या लिखा है? Now ask what's written in your book. I have very few books. How come like you? I've always been suffering a lot from big troubles in the base chakra and the Sahasrara chakra, and that is very, very nasty. It causes great tensions, and also now, today and yesterday, I was nearly suffocating. मुझे मूलाधार और सहस्त्रार चक्र में बहुत तकलीफ होती है, उनकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है और मुझे सांस न लेने जैसे महसूस हो रहा था ऑलमोस्ट। आप बुरे बुरे विचार क्यों करती हैं? Why do you have negative thoughts? I just have to. Yes. It's also nasty for me. I don't like this. सब तकलीफें को भी इनवाइट कर रहे हैं क्या करो? You're inviting all of the problems. What can I do? एक्चुअली ना बुरे विचार करना छोड़ दो। Give up your negative thoughts. कुछ नहीं, आज अपने को समझाओ कि आज मैंने स्वामी जी से बात किया, स्वामी ने मेरे को नेगेटिव थॉट्स करने को मना किया। Explain to yourself. Today I talked to Swamiji and he asked me not to have negative thoughts. सब प्रॉब्लम वहीं पे है। जैसे हम नेगेटिव थॉट्स करते हैं, ऑटोमेटिकली हम सांप से भी सही है, कितनी भी स्टेप ऊपर चढ़े हो, फिर सांप के द्वारा फिर नीचे आ जाए। The problem is all with the negative thoughts. It's like a game of snakes and ladders. No matter how high you've climbed, when you have negative thoughts, you just come down the snake. मैंने 10 दिन ध्यान करके आपने एक अच्छी स्थिति बनाई, आपने एक नेगेटिव थॉट किया फिर नीचे आए। So you meditate for 10 days and you achieve a good spiritual state, then you have your negative thoughts and you come all the way back down again. तो आपके लिए केवल एक ही मैसेज है, नेगेटिव थॉट करना एकदम बंद करो। So I have just one message for you: stop negative thoughts. और जब भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, एकदम अपने आप को समझाओ, स्वामी ने मेरे को नेगेटिव थॉट्स करने को मना है। Whenever you get a negative thought, explain to yourself, Swamiji has asked me not to have negative thoughts. खत्म। That's it. We're out of time. I'm sorry. समय समाप्त हो गया. समय का आप देखो। You see about the time. Let's end with the Shanti part. दूसरा शांति पाठ के बेटे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इच्छा है आप लोग थोड़ा कॉपरेट करो। तो मैंने ये बता रहा हूँ कि हिमालय में आदिवासी जातियाँ केवल भूमि माता को प्रार्थना करके अपनी बीमारियाँ ठीक कर देती। I have a wish. I hope that you can cooperate. Like I said, in the Himalayas, the native inhabitants, they cured all of their diseases by praying to Mother Earth. कल सुबह जो लोग ध्यान के बाद में एक ग्राउंड के ऊपर गोल सर्कल करके खड़े रहे। Tomorrow morning, after meditation, I'd like you all to make a circle on the lawn outside. और मैं आपको एक प्रार्थना करने को बोलूँगा। And I will ask you to say a prayer. और जैसे प्रार्थना बोलोगे ना, आपको महसूस होगा आपके शरीर की बीमारियाँ, आपके शरीर के बोझ जमीन खींच रही है। And as you say this prayer, you will realize that the earth is pulling out all of the negativity in your body. आप शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। You will become pure and holy. दूसरा ऐसे करते समय आपकी जो तकलीफ है, आपको जो शरीर की परेशानी है, आपको जो शरीर की बीमारी है, आप अपना अपना बोलो
कि जैसे किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के बोल सकता है, किसी को बीपी है तो बीपी के लिए बोल सकता है। आपको जो तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करने की भूमि माता को प्रार्थना करो। As you are saying this prayer, you can each add whatever physical ailments bother you. So if you have diabetes, you can pray for that. If you have high blood pressure, you can pray for that. किसी को नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो नकारात्मक विचार दूर करने के लिए बोल सकते हैं। किसी को पास्ट लाइफ के ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो पास्ट लाइफ के विचार दूर करने के लिए कह सकते हैं। मैंने आपकी जो भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम पूर्ण भाव के साथ में पृथ्वी माता को समर्पित करने का है। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो सब धीरे 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 कम होगा। और दूसरा, इसकी आपको अनुभूति भी होगी। फिर ऐसे प्रैक्टिस आप आपके घर लेके तो Whatever your personal problems are, pray for that. If you have negative thoughts, pray for that. If you have thoughts about your past life, pray for that. Whatever your private personal problems are, say that prayer, see them go away, and then you can practice this also at home when you go back. We have to find out where so many of us can get together tomorrow. We'll see about that.